पीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मैं अनवर सिद्दीकी अपने साथी कमेंटेटर मयूर के साथ आप सभी का अभिवादन करता हूं। मर्सर वर्सेस मेटलाइफ के बीच ये मुकाबला शुरू होता हुआ। मेटलाइफ के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मर्सर की टीम इस वक्त मैदान पे नजर आ रही है। दोनों ही आरंभी बल्लेबाज तैयार हैं पारी का आगाज करने के लिए। ऑन फील्ड अंपायर अश्विनी कुमार के साथ आकाश नजर आते हुए और स्कोरर स्टेटिशियन की भूमिका में निश्चल आज कमेंट्री टीम के साथ ज्वाइन है। स्वागत है आपका भी। हमारी पूरी लाइव टीम ये भी ये टीम है ना, तैयार है। पिछले मुकाबले में बात करें 191 रन बनाई थी पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल की टीम ने। एचएसबीसी के भूल गए थे क्या? जहां तक पिच का सवाल है, पिच बहुत ही ड्राई नजर आ रही है, सूखी हुई विकेट है। पहली पारी में 191 रन बनाए थे पहले मुकाबले में। दूसरी पारी में रन बनाना आसान नहीं था, लगातार विकेटें गिरती गई और अंत में एक बड़े मार्जिन से मुकाबला जीता दिल की टीम ने। और ये मुकाबला मेटलाइफ वर्सेस मर्सर के बीच। इस वक्त मेटलाइफ के दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए अपने कदम को गामजन कर चुके हैं पिच की ओर अग्रसर। बहुत ही अच्छा वातावरण, खुशनुमा माहौल आप देख सकते हैं। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग 11 सीजन इस टूर्नामेंट के प्रायोजक दफा न्यूज, एसजी विली बेकम, विजॉन ग्रोमिंग इंडिया, केईआई वायर एंड केबल्स, इफको ऊर्ता सहकारी स्वामित्व, मैक्स प्रोटीन एंड बैट्समैन देखो। और ये मुकाबले की पहली गेंद एक चौथे के साथ 4 रन के लिए मयंक की स्ट्राइक पे और पहली गेंद पर चौके से अपने खाते की शुरुआत की है। बहुत ही उम्दा शुरुआत मयंक के द्वारा और इसलिए मैं आत्मविश्वास बढ़ता इस बार। शॉट ऑफ गेंद ऑफ स्टंप पर उछाल लेती गेंद को हल्के से स्टीयर किया था, गली की जानिब गेंद को उठा लिया, रन की गुंजाइश नहीं मयंक के साथ में। वीरेंद्र पारी का आगाज कर रहे हैं। मयंक फिलहाल स्ट्राइक पे। शैलेंद्र की गेंद और इस बार बढ़िया शॉट, गोली की रफ्तार से दंडन आती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शुरुआत बहुत ही उम्दा की है मयंक ने, जैसे उनके रीच में गेंद थी बहुत ही अच्छा फ्रंट फुट का इस्तेमाल, गेंद कमर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत देते हुए मेटलाइफ को कप्तान ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एक बड़ा स्कोर होगा जेहन में और मयंक को अच्छी शुरुआत मिल चुकी है इस पारी में। पहली गेंद पर चौके से अपने खाते की शुरुआत की, तो उसके बाद अगली गेंद को डिफेंस और एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। शैलेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार पूरी सावधानी बरती है। आउटफील्ड बहुत तेज नजर आती है, मैदान बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। शैलेंद्र इस वक्त पारी के पहले ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। शैलेंद्र रावत ये अच्छी गेंद थी, उतनी ही अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया मयंक ने। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंद, बहुत ज्यादा उछाल नहीं था गेंद में और अपने आप को भी पोजीशन में लेकर के आए थे। बहुत ही बेहतर ढंग से दिशा दी थी, वहां पर गेंद को उठा लिया, रन की गुंजाइश नहीं। पावर प्ले चल रहा है। और इस बार शॉट ऑफ गेंद, स्कोर कट किया है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है।
गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आती हुई। तीसरा चौका ओवर का और एक अच्छी शुरुआत मयंक के द्वारा। आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर हल्के भी हाथ चलाने की आजादी मिली, उसका पूरा लुत्फ उठाया है। पहले ओवर के बाद स्कोर 12 बिना किसी नुकसान के, और साथ ही वीरेंद्र कुमार को अपनी पारी का आगाज करना बाकी है। मयंक फिलहाल 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदें खेली है, 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए। पर शैलेंद्र रावत जिस सोच के साथ पहले ओवर की गेंदबाजी की थी, उन्हें उसमें कामयाबी नहीं मिली है। मर्सर के कप्तान अपने गेंदबाज से बातचीत करते हुए चाहत, हालांकि ऑन साइड में नजर डालें तो 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं शॉर्ट फाइले के साथ, शॉर्ट में विकेट और मेडॉन ऑन साइड में, विकेट कीपर के अलावा स्लिप। ड्राइवर की शुरुआत एक बार फिर से कवर बाउंड्री पर, और इस बार डीप में खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल लेने का मौका है। अरुण गेंदबाजी कर रहे हैं 77 नंबर की जर्सी में। हिंडन रिवर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त अरुण। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर नियंत्रण का अभाव नजर आया। दोनों बल्लेबाजों ने अपना भागकर छोर भी बदला है, अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ। अच्छी शुरुआत की जरूरत है मेटलाइफ को। स्कोर 15 रन, और इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया कनेक्शन पुल किया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए पारी का पहला छक्का। अभी तो शुरुआत थी, अभी तो इनका इख्तिताम होना बाकी है। अभी तो चौका मारा था, अभी तो छक्का देखना बाकी था, वो भी लगा है। और ये बल्लेबाज बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। वीरेंद्र कुमार 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदें खेली हैं। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का कोई इरादा नहीं, जाते हैं ऑफ साइड में। काफी प्रोटेक्शन नजर आ रहा है, और जो जाल बुनी है उस जाल में फंसाने की कोशिश है गेंदबाज के द्वारा, उसमें वो फंसना नहीं चाहते, खेलने का कोई इरादा नहीं। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद बाउंड्री से उठाई जाए सिंगल के साथ, अपना छोर बदलते हुए। अभी तक देखा जाए जिस रन गति से रन बना, अभी तक 22 रन बने हैं, 1.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। वीरेंद्र 8 और मयंक 12 पर। यह अच्छा शॉट है, खूबसूरत कवर ड्राइव गेंद, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगर खिलाफ होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सब में, यहां पे सिर्फ तुम्हारा मकान थोड़ी है। बड़ी सोच के साथ दोनों बल्लेबाज पारी का आगाज कर रहे हैं, और जब जब कमजोर गेंद मिली है उस पर कड़े प्रहार किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। अरुण की गेंद इस बार मिडिल स्टंप पे आती हुई, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लगने दिया। स्ट्रोक खेलने का कोई इरादा नहीं, समझदारी से काम ले रहे हैं। और एक अच्छे बल्लेबाज के अंदर ये इस तरह की तकनीक का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, संयम भी होना चाहिए, थोड़ा सा आक्रामक रुख अख्तियार करने की आदत भी होनी चाहिए। उन सभी का समावेश होना बहुत जरूरी है। दोनों बल्लेबाज अब तक पहले 2 ओवर के खेल में 26 रन जोड़े हैं बिना किसी नुकसान के। अगले कुछ ओवर में और शायद गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, स्पिनर्स को बुलाया है कप्तान चाहत ने। जानते हैं कि शुरू में अगर एक बार हावी होने का मौका मिलेगा बल्लेबाजों को, तो फिर गेंदबाजों के लिए अच्छी खबर नहीं रहेगी।
और इसलिए किसी तरह की कोई आजादी देने के मूड में नहीं है। गेंदबाजी में बहुत जल्दी परिवर्तन, और ये पहली गेंद स्लॉट में है, लोफ्टेड शॉट, गेंद बॉल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर के 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। जबरदस्त बल्लेबाजी, कि मेरे दुश्मन भी कम नहीं लेकिन मेरी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। बहुत ही अच्छा संपर्क था। जब शुरुआत आपको अच्छी मिल जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है। आप जिस गेंद पर प्रहार नहीं करने थे उसमें भी प्रहार करने में कामयाब रहते हैं। और ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही कमाल का नजर आया, अभी तक उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है। 32 रन में 2.1 ओवर के खेल में 32 रन बने हैं। रनों की रफ्तार काफी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही इस वक्त, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करने की मंशा जाहिर की है। ये अच्छी गेंद है, और फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। रनों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है अभी तक गेंदबाजों ने। प्रवीण कुमार गेंदबाजी करें, इनका भी पहली गेंद पर स्वागत किया छक्के के साथ। वीरेंद्र कुमार मयंक, वीरेंद्र 15 के निजी स्कोर पर सामना करेंगे। ये अच्छी गेंद, पर एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद को उठाने में कामयाब, रन की गुंजाइश नहीं। अच्छा, मयंक सामना कर रहे हैं। और मयंक ने पहले ओवर में 2-3 चौके लगा दिए थे। फिर अगले ओवर में वीरेंद्र ने भी कहा कि हम भी पीछे रहने वाले नहीं। उन्होंने भी ताबड़तोड़ शुरुआत की अपनी पारी की। इस बार गेंद को कट किया है, थोड़ी सी मिस फील्ड हो रही, बॉल को उठाया जाए। 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज मयंक के पास। स्कोर 33 रन। अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया है, अपने आप को बरकरार रखा है दोनों बल्लेबाजों ने। मयंक और वीरेंद्र की जोड़ी इस वक्त में, दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अक्सर दाएं और बाएं हाथ की जोड़ियां देखने को मिलती हैं, पर यहां पर मेटलाइफ की ओर से दोनों ही बल्लेबाज दाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। परवीन की गेंद और इस बार बढ़िया निष्पादन। ये कलात्मक बल्लेबाजी का नमूना दिखाया इन्होंने, उदाहरण प्रस्तुत किया है। और एक और बार गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत, जितनी भी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की कम है। जिसको भी स्ट्राइक मिलती है और जिसके भी सामने कमजोर गेंद मिलती है, कमजोर को धक्का दे करके बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। यह दुनिया का फलसफा है। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरी खुशी में सारा जमाना होगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जो दिखता है वही दिखता है। तो 3 ओवर के बाद 38 बने बिना किसी नुकसान के। वीरेंद्र कुमार 19 और मयंक 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट काफी बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया अभी तक दोनों ने। बबल किशोर गेंदबाजी आक्रमण पे, कितना गुल खिलाएंगे ये, परिवर्तन के दौर में बुलाया है कप्तान ने। ये फ्लाइटेड गेंद पर उल्टास कर बैठे, गेंद सीमा रेखा के बाहर ही नजर आ रही है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। बहाने तो वो लोग बनाते हैं जिन्हें चलना नहीं आता। जो चलने वाले होते वो रास्ते खुद बना लेते हैं। ये दिखाया है दोनों बल्लेबाजों ने, मयंक और वीरेंद्र कुमार ने। एक और फुलटास गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस तरह काम नहीं चलता। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। बढ़िया बल्लेबाजी की जा रही इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। मयंक अपनी चमक बिखेरते हुए इस मुकाबले में 29 पर पहुंच चुके हैं। महज 14 गेंदों का सामना किया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही इस वक्त मेटलाइफ की ओर से।
ये अच्छी गेंद है। अंपायर से सवाल पूछ रहे हैं, फिर अंपायर ने इस अपील को कितने से खारिज कर दिया कि घर की तकसीम में अगनाई गंवा बैठे हैं, पूर्व गुलशन से सनासाई गंवा बैठे हैं, बात को आंख से समझ लेने का दावा न कर हम इसी शौक में बिनाई गंवा बैठे हैं। 50 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार हवा में गेंद, और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ अच्छी वापसी कहेंगे। 50 रन की पार्टनरशिप का अंत होता हुआ मयंक आउट होकर मैदान के बाहर आते हुए, और तेज शुरुआत मिली थी मेटलाइफ को, लेकिन जो शुरुआत मिली मयंक को उसे बरकरार रखने में नाकाम रहे। अक्सर बल्लेबाजों के साथ ऐसा होता है, जब ऊपरी हिस्से पर बल्ले के लगी गेंद हवा में गई और कवर के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच पकड़ा है। 50 पर 1, 3.5 ओवर का खेल हुआ है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 11वां एडिशन इस टूर्नामेंट का 10 साल बेमिसाल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राकेश, चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। जो एक फाउंडेशन की जरूरत थी वो दिलाई है दोनों हाई आरंभिक बल्लेबाजों ने। अब यहां से कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राकेश और उनके साथी बल्लेबाज वीरेंद्र कुमार के ऊपर है। इस बार लेग स्टंप पे आती हुई गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लांस किया गया जा रही फाइल लेग बाउंड्री की दिशा में। दो खिलाड़ी भाग रहे हैं, एक ने रोका है, थ्रो किया है, 2 रन लेने का मौका। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 52 एक विकेट के नुकसान पे। अगले कुछ ओवरों में एक बार फिर से मेरे साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आप मैच का आनंद उठाते रहे। स्वागत है आपका। For 1 in 4 overs is Metlife. They won the toss today versus Mercer and had no hesitation in electing to bat first. Both the batsmen have given a very good start. 1 wicket down. Rakesh Kumar has just joined Virendra Kumar and 19 not out of 7 plays it very well to the covers. There have been so many boundaries. Just 4 overs have been bowled, but they have already initiated a flurry of boundaries. At one point of time, it looked like a highlights package. Actually, the score is now 52 for 1. 16 more overs to be bowled. It's not a very bright, sunny afternoon, but the help of the breeze will definitely ease, and this might just ease the fielder to take the leap forward, but he didn't dive enough. Couldn't really get to know why he didn't dive much forward, but that catch was up for grabbing. He did make some distance onto the ground, but didn't make the bounce enough to collect the ball cleanly. And couple of runs for Virendra Kumar. He will move on to 21 of just 9 deliveries. The score is now 54 for 1 in 4.2 overs. Praveen Kumar has been expensive, 14 runs already of his 8 deliveries. Score 54 for 1. It's a huge score. Already 50 up in less than 5 overs. They will be looking to up the score more than what the first match had. Little bit of outside edge, I believe here. The man from Gully running into save it. No run will be scored. The score remains on 54 for 1 in 4.3 overs. The non-striker must just had a chat with him regarding what next to be done. Probably
That's what they were discussing when they were at the dugout. Here's the next ball from Praveen Kumar. Plays it so well. Takes the aerial route and onto the grass banks for 6. The score moves on to 60 for 1. What a good clean strike this is from Virendra Kumar. He moves on to 27 of just 11 deliveries. Anything outside off stump and into his arc. He doesn't wait for a second invitation, and this time was no different, and onto the grass banks for 6 runs. 60 for 1 in 4.4. And Rakesh Kumar, I'm sure at the other end, he must be learning a trick or two of how to hit the strokes. He's dealing in boundaries, 27 not out of just 11 deliveries. They have to be very, very careful here. Praveen Kumar is already expensive. 20 of just 10 balls that he has bowled. Here's again. And it's in the air over extra cover. Both the fielders giving a chase, but they will be both the spectator. It's going to the sweeper cover for 4 runs. 64 for 1, and Virendra Kumar already 31 not out of just 12 deliveries. He is a man in a mission here for Metlife versus the Marsha. चालू है ये देखो ना नहीं हो रही आपने 64 for 1 दोनों चालू है. Last ball to be bowled from Praveen Kumar. Four runs already being conceded of 11 deliveries. Here is the last ball from off the second over. Doesn't fly the ball enough, but he glides it. We have to wait for the umpire signal whether it's off the bat or it's a legs, but it's a boundary nonetheless. It's a wide actually. 5 runs. This is a very, very, very expensive over from Praveen Kumar. Wide and 4 runs. So the score moves on to 69 for 1. This is a very, very expensive over. Praveen Kumar 25 runs already off his 11 deliveries, one legitimate ball remaining in the second over. Virendra Kumar 31 not out of 12. 4.5 over, 69 for 1 on the board already. Here's the last ball. Plays it very well. And pierces both the fielder and towards the long boundary for 4 runs. Long off boundary, beg your pardon. And at one point, we definitely thought it was a highlights package with the flurry of boundaries, and this time it looks no different. And it will bring the end of the 5 overs. 73 for 1 for Metlife versus the Marsha. And Praveen Kumar agony ends with 29 runs. He has considered of 2 overs. Rakesh Kumar 2 not out of 1 delivery. Virendra Kumar 35 not out of just 13 deliveries. Very, very good start here from Metlife versus the Marsha. This is the second match of this Saturday, of this weekend, Saturday, and we just have 2 matches on this ground number 1. But from tomorrow, we'll be having matches simultaneously being played on ground number 1 and ground number 3. This is a Dafa News Pro Corporate League, and we've already had some very great matches of this league. Plays it very well, will not get any run. Score remains on 73 for 1 in 5.1 overs. This is a very, very good start from Metlife. Both the batsmen are seeing the ball very well, especially Virendra Kumar or the non-strikers in 35 not out of just 13 deliveries. What a way to see the ball already like a football. This is ominous signs here for Marsha. Next ball shot outside off stump, cuts it very well. The fielder also does very well and will rotate the striker. Rakesh Kumar gives the strike to Virendra Kumar. Rakesh Kumar 2 not out of 2. The side of Virendra Kumar, our 35 not out, will be like a danger lurking at the other end for the bowler. Shailendra Rawat is again little bit short and he glides it very well, but that bounce from the ball, but he did very well to keep an eye on the ball itself and fielded it very, very beautifully, giving it back to the wicket keeper. No runs been scored. Shailendra Rawat 13 runs already of 9 balls that he has bowled. This has not been a bad over till now for Shailendra. Here's the next ball. Plays it well, goes down the ground, and 2 bounces to the man
He comes in, racing in from the long on boundary towards the ball, and retrieves in and gives it back to the bowler. Rakesh Kumar now has the strike, 3 not out of 3. Score moves on to 75 for 1. Well defended off the back foot is Rakesh Kumar. Absolute respect to the bowler. But what a start this is for Metlife. I'm sure they'll be very, very proud of what they have achieved till now. Here's the last ball from Sailendra. On the leg side, really gracefully played at the very, very last moment, and will keep the strike. The score after 6 overs, Metlife are 76 for 1. $76 for 1 for Metlife. Bowler कौन है bowler? Arun. Arun has been given the ball for the 7th over. 6 overs have been bowled. 76 for 1 for Metlife. There is Arun. Outside off stump, cuts it very well, but a fielder does it equally very well. Full stress on the right side, and he saved a definite boundary for sure. Kept his eye right on the ball and fielded very well. This is the kind of fielding that you really, really want from your fielder, especially at a time when the runs have been flowing thick and fast. Score is 77 for 1. Sorry. $77 for 1. Fares it very well and onto the boundary for 4 runs. The distraction hasn't deterred him a bit. And the score is now 81 for 1. He came very ferociously, gave himself some room, Virendra Kumar, and moves on to 40, not out of just 16 deliveries. What a way to start your innings. Just a few strokes away from a very well-crafted half-century for Virendra Kumar. And a touching distance is the score for his team from 100. 6.2 overs, 81 for 1 already on the board from Metlife. This is just went a little ahead of his bat. That was the reason why he couldn't connect it. But nonetheless, he'll get a single off his bat. Probably it hit his gloves. He'll give the strike to Rakesh Kumar. 5 not out of 6. The score moves to 82 for 1 in 6.3 overs. And Rakesh Kumar, he needs to give good company to Virendra Kumar. On the up, on the cover. Misfield, this is criminal. This is definite criminal. And you need to have your eyes right on the ball. The singles and couples definitely go and hurt you in the end. But nonetheless, it's Virendra Kumar on strike. 41 not out of 17 deliveries. Is it very well to recover? There is protection this time at sweeper cover. Will give the strike back to Rakesh Kumar, who is on 6 not out of 7. Virendra Kumar moves himself to 42 not out of 18 deliveries, and the score moves on to 84 for 1 with 1 legitimate delivery remaining in the 7th over. Very short on the leg side. Thankfully, the fielder was a little back
and had there been a fielder, it would have easily popped up into him. And after the end of the 7 overs, Metlife are 85 for 1. Virendra Kumar 42 not out of 18, Rakesh Kumar 7 not out of 8, and expensive over from Marsha's Arun Sharma. 2 overs, none for 22. That was 1 over they were trying to capitalize. They definitely get a couple of boundaries. And now Rakesh Kumar is on strike. Avtar Singh has the ball in his hand. They will now try to convert this wicket column from 1 to 2, 2 to 3. Very much required. Very well played. Actually, not very well connected. He was trying to swing it through the covers, but probably the bat got tilted in his hand, and eventually it went towards square leg for a single. Nonetheless, the score moves on to 86 for 1. And now the dreadful sight of Virendra Kumar, 42 not out of 18, just 2 strokes away from a very good half century. Plays it very well. Fielder giving a chase, get a single. From a distance, it looks to be the ball will be easily collected, but it's never easy when you're running from one position to the other. Now the strike is on Rakesh Kumar, 8 not out of 9. Taken on the full appeal, and it's given him for Ashwani Verma. He had some other ideas. He is indicating to the batsman that the ball probably might have just hit him in midland leg. But the second wicket is down for Metlife. The score is 87 for 2 in 7.3 overs. And after seeing will give immediate impression to his captain. He captures 1 wicket for conceding 2 runs of his 3 deliveries. But it'll show 2 wickets on the board for Metlife. 87 for 2. But the good part for Metlife is Virendra Kumar is still there at the crease. 43 not out of 19 deliveries. Gaurav Garg is the new batsman. Will be joining Virendra Kumar. 43 not out of 19, but he'll be at the non-strikers end. Metlife 87 for 2 in 7.3 overs. Bit of a gloomy condition here at PCL Sports Complex here in Noida. Here is Avtar Singh. Plays it very well through the cover. Yet to get off the mark. Very first delivery that he is facing now. Score remains on 87 for 2 for Metlife. Bit of a gloomy condition here. This is the Dafa News Pro Corporate League, Season 11. Yes, after Singh again, taken on the full. How did that miss the stump?
Probably a little bit fuller on middle and off. So hands on head, but he has to go back with the ball in his hand back to his run out. I'm sure the batsman must be having his heart in his mouth the moment he couldn't connect the ball, but luckily for him he will be surviving another day now. The score remains on 87 for 2. One more delivery remaining in the 8th over. On the leg side, flicks it very well, but there is the protection. Will just get a single, keeps the strike. The score is now 88 for 2 in 8 overs for Metlife versus Marsha. आपको करना है कि मैं करूँ एक और क्या नाम है कौन है बॉलर Arun has the ball in his hand. 88 for 2 for Metlife. Brilliant start thanks to the opening partnership. They started with a flurry of boundary. It was almost like a replica of the very first one's first ball went for a huge 6. And they were the eventual winners. And the second match, again, it's off runs. Taps it very well and fielded so well. This could be a run out. Oh, this is a fumble for the wicketkeeper. Oh my lord. He could have easily had some patience and would have collected and dislodged the stump, but eventually he could easily make it to his crease, and he has survived, and he should definitely look to capitalize on this opportunity. In the last over, he couldn't connect a full toss, but now he has survived the run out. I think he has all the luck on this Saturday. And fumbles all around. This was a very good pick up and throw from the man at gully, but eventually to be fumbled. On the leg side, this will be definitely a leg bye. But coming back to the last delivery, that was the opportunity missed from the wicketkeeper. And I'm sure he must be thinking about that, but he needs to keep that aside and focus on the repair work ahead. But that man at gully did a very fabulous job. That ball was heading towards the boundary. But back to business again, and they will now have the dreadful side of Virendra Kumar, 43 not out of 19 deliveries. There's a gentle appeal, and the dreadful finger of Ashwini Baba goes up. Virendra Kumar is disappointed and is disgusted with himself, and why not? He was all settled up for a very well crafted half century, but eventually has to be dismissed for 43. But what a knock! And 43 of just 20 deliveries. I'm sure his teammates at dugouts will stand up and applause for this innings. He has set up a perfect platform for Metlife versus Marsha. And but this was a very wicked. Mercer, the man in blue, the other man in blue, they'll be very happy to see the back of Virendra Kumar. You can hear the applause from the dugout as he reaches his colleagues. And well done, Virendra Kumar. We definitely thought that a half century was coming, but never to be for today. The score is now 89 for 3 for Metlife in 8.3 overs versus Marsha. This is the Dafa News Pro Corporate League Season 11, and this is hitting up. This is definitely hitting up here at the PCL Sports Complex here in Noida. And again, like to take this opportunity whenever there is a break to thank our wonderful sponsors, Dafa News, the principal sponsor, V-Zone, our grooming partner, and KEI Wires, Max Protein, and last but not the least, the ball which has created magic in the hands of the bowler, SG ball. Here's the next ball. Played it very well, respects the bowler, defensive back to him, he collects in his run out. But this was all happening here. There was a run out opportunity missed, and then a wicket of the huge Virendra Kumar. Everything happening.
This is a very, very good passage of play, and I'm sure everyone will be liking this. Here present at the ground. Here's the next ball. Plays it up in the air, but it will fall in no man's land and onto the boundary for 4 runs. Fielder giving it a chase, but he has to go over the ropes to retract the ball from near the generator on onto the field. This is good batting, very, very good batting. He was playing it little politely the ball before, but the next ball he played a little uppishly, found the gap and onto the boundary for 4 runs. The score now moves on to 93 for 3 for Metlife. They're inching very, very closer to the 100-run mark versus the Marsha. Here's the next ball, very, very short, tap down the leg side. They'll quickly go for a single and will get that, trying to come back for the single for the second one, but the non-striker was not interested at all. The score now moves on to 94 for 3 at the end of 9 overs. And I'll be handing over the mic to our Hindi commentator Anwar Siddiqui, who had a good sumptuous lunch, and I'm sure he'll be now giving his words of melody, Hindi commentary, our man of poetry in action. Anwar ji, आपके लिए माइक सदा बहार. शुक्रिया मयूर. ओवर के बाद स्वराज के 3 विकेट के नुकसान पे मिडलाइफ के बल्लेबाजों ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की और अब गेंदबाज अरुण शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं. एक सफलता मिली अरुण शर्मा को. रोशन शेरावत और गौरव गर्ग बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्रीज में मौजूद है ये दोनों बल्लेबाज. ये कड़क शॉट है पर खिलाड़ी भी है और हाथ में भी गेंद गई है. विकेट मिलता हुआ अवतार सिंह को. अवतार दिखाते हुए अपना अवतार सिंह और बड़ी कामयाबी. ये चौथा विकेट का पतन होता हुआ. जो शुरुआत दिलाई थी वीरेंद्र मयंक रावत ने वो बरकरार रखना चुनौती है, पर अवतार सिंह ने एक और सफलता हासिल की है. वापसी करने की कोशिश में कामयाबी मिली है. अवतार सिंह ने अभी तक 1.2 ओवर की गेंदबाजी की है. 4 रन देकर 2 सफलता हासिल की है. बहुत अच्छी इकॉनमी रेट रही है. अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी की है. टीम में विकेट बाउंड्री पर ये काउका अंदर के इलाका थोड़ा सा लंबा पड़ता है. वहां पर गेंद को कैच किया था. बढ़िया फील्डिंग. नए बल्लेबाज अविनाश बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं. मिडलाइफ के कप्तान चाहेंगे कम से कम 180-190 तक टीम का स्कोर पहुंचे. और यहाँ पर अवतार की प्रशंसा करनी होगी. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है. 2 सफलता इस गेंदबाज के नाम है. रिवर एंड से गेंदबाजी की जा रही है इस वक्त. ये अच्छी गेंद ऊपर डाली हुई. डिफेंस किया है. दूसरा मुकाबला आज के दिन शनिवार के दिन चल रहा है और थोड़ा सा सूर्य की जो गर्मी है वो कम नजर आ रही है, कम एहसास हो रहा है. इस बार गेंद को स्टीयर किया है. गली के खिलाड़ी गेंद को उठा रहे हैं. रन आउट की अपील की जा रही है पर दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन मुकम्मल किया है. कॉल अच्छी थी. सही समय पर अपने अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज. 10 ओवर का खेल प्रगति पर. इस ओवर के बाद भी 10 ओवर का खेल आना शेष रहेगा. शुरू में जिस रफ्तार से रन बन रहे थे उस पर काफी हद तक अंकुश लगाया है अवतार ने अपनी गेंदबाजी के जरिए. अब ये आप देख सकते हैं
अभी तक इन्होंने 5 रन लिया है। इस बार स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, पर उसे बहुत ही चमकतापूर्वक पहचान लिया था, देख लिया था। शॉर्ट बैकवर्ड इस पर लेग की दिशा में ढकेल कर अपना छोर बदला है। 4 विकेट के नुकसान पे मैक्स प्रोटीन पावर पैक। ये अच्छा शॉट है, लॉन्ग द कार्पेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री से गेंद को फील्ड किया जाए, आसानी के साथ सिंगल लेने में कामयाब 10 ओवर का। तो 10 ओवर के बाद 98 कुछ निश्चल में 98 10 के बाद 98 4। मेटलाइफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक भी पहले 10 ओवर की बड़ी कहानी रही है। वीरेंद्र कुमार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 43 बनाए 19 गेंदों का सामना किया और इस दौरान इस पर तो विकेट काफी रन बटोरे। वीरेंद्र एक अच्छी पारी की ओर बढ़ रहे थे, पर इसी बीच में उनका विकेट गंवाया है मेटलाइफ ने। उसके बाद रनों की रफ्तार पे अंकुश लगाया गेंदबाज अवतार सिंह ने। 2 ओवर में महज 7 रन देकर 2 सफलता प्राप्त की है इस गेंदबाज ने, और अभी तक पारी के 10 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। अभी भी देखा जाए तो आने वाले 10 ओवर का खेल आना शेष है, और जिस लय में बल्लेबाजी हो रही है, जिस रफ्तार से रन बन रहे हैं, 200 का आंकड़ा छूना मुश्किल कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आने वाले 10 ओवर में कैसी गेंदबाजी रहेगी मर्सर के गेंदबाजों की, ये देखना अहम रहेगा। फिलहाल इस पारी में दोनों नए बल्लेबाजों के ऊपर अहम जिम्मेदारी है। अविनाश सिन्हा और भूषण शेरावत बल्लेबाजी कर रहे हैं। ड्रिंक्स का समय हो चला है। इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग 11वां एडिशन एसजी विली बिकम विद ऑन ग्रोमिंग इंडिया KEI वायर एंड केबल्स इफको पूर्णतः सहकारी स्वामित्व एंड मैक्स प्रोटीन। यहाँ पर जो भी स्पॉन्सर है सबकी अपनी अपनी अहमियत है, अपने अपने क्षेत्र के माहिर फन है, अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। मैक्स प्रोटीन जहां आपको ऊर्जा देता है, आपके अंदर कमजोरी का एहसास नहीं होने देता, मैक्स प्रोटीन खाइए और अपने आप को चुस्त दुरुस्त पाइए। और स्मार्ट एंड हैंडसम बनने के लिए विजॉन ग्रूमिंग इंडिया। चेहरे पे मुस्कान, दिलों में अरमान लेकर आइए पीसीएल में और छा जाइए। एसजी तो नाम सुना ही होगा, नाम है विश्वास का एसजी। जब क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो एसजी के प्रोडक्ट से आप अछूते नहीं रह सकते। एक खिलाड़ी के तौर पर आप उसके बैट का इस्तेमाल करते हैं, गेंद का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीजों को आप अपने साथ जोड़ते हैं। पर KEI वायर एंड केबल्स जब शाम ढलने लगती है, इनके वायर का इस्तेमाल होते हुए दूधिया प्रकाश में जगमगाता हुआ खेल मैदान नजर आता है। KEI वायर एंड केबल्स भरोसेमंद, विश्वसनीय, और पिछले कुछ वर्षों में राज किया। लेकिन आज हम जिस देश में जीते हैं, ये किसानों के लिए कहा जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें हिस्सेदारी, उसमें अहम जिम्मेदारी निभाई है इफ्को ने। हरियाली जो नजर आती है, इफ्को की अहम भूमिका रही है देश को हरा भरा करने में। इफ्को पूर्णतः सहकारी स्वामित्व, इस टूर्नामेंट के प्रायोजक, ये तमाम सभी
स्पॉन्सर का थैंक यू कहना चाहूंगा अपनी सहभागिता के लिए, अपना साथ देने के लिए, पीसीएल के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने का। ड्रिंक्स ब्रेक का समय हुआ समाप्त। 10 ओवर के बाद 98 4 विकेट के नुकसान पे मैच लाइफ का स्कोर है। शायद संपर्क टूट गया है। नेवर की शुरुआत हो रही है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को बुलाया है और ये पहली गेंद नो बॉल कर दी है, लाइसेंस दे दिया है, फ्री हिट है। बल्लेबाज अविनाश सिन्हा, उनके साथ भूषण शेरावत। बबल किशोर और उनकी गेंद इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, स्टेप आउट करके बाहर निकले थे, लेकिन इतनी पिच तक नहीं पहुंच पाए जितना वो पहुंचना चाहते थे। फिर भी एक रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास। सोरन पूरे इस बार कट करने की कोशिश, चुपके गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। शॉर्ट हैंडेड के खिलाड़ी को थोड़ा सा वाइड किया जा रहा है, गली पर खिलाड़ी मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट है। इस बार शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथों में, उनकी कवर पर निकलना चाहते थे, मना किया। 100 रन पूरे हुए हैं, 100 रन 4 विकेट का नुकसान पे पारी के 11वें ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। ये अच्छा पंच किया है, कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल लेने का मौका। लगातार आज सुबह से हवाएं चल रही हैं। इस बार स्टेप आउट किया है, फ्लाइटेड गेंद और खिलाड़ी के हाथ में बबल किशोर को सफलता मिलती हुई, 5वीं विकेट मिलती हुई मर्सर को। मेटलाइफ का एक और विकेट का पतन होता हुआ, और जिस तरह से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज किया है गेंदबाजों ने, ये जग जाहिर है। आप देख सकते हैं शुरुआत बहुत ही उम्दा दिलाई थी दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने, उसके बाद जो पारी लड़खड़ानी शुरू हुई है, एक के बाद एक विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, साझेदारियां बड़ी होने नहीं दी है अभी तक। ये पहले साझेदारी का कमाल है जो कि 101 रन बोर्ड पे नजर आ रहा है। 10.4 ओवर के बाद 5वें विकेट का पतन हुआ है। मध्यक्रम के बल्लेबाजों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, फिर वो समंदर का रूप लेता है। जैसे कि पहले मुकाबले की पहली पारी में देखने को मिला था, छोटी छोटी पारियां रही थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि 151 तक पहुंचाने में कामयाब हुई थी डेल को। T20 गेम है, कम से कम 2-3 साझेदारियां हो, 40 रन 50 रन की, जहां से आप 200 का आंकड़ा छू ले। बबल की गेंद इस बार लेग स्टंप पे आती हुई गेंद पैड से टकराई। ओवर समाप्त हुआ है, सफल ओवर समाप्त हुआ है बबल किशोर का। 11 के बाद 101, 5 विकेट के नुकसान पे। बबल किशोर अवतार सिंह पिछले 2 ओवर में लगातार विकेट गिरी है। इससे पहले पारी के 10वें ओवर पे अवतार ने सफलता दिलाई थी, 11वें में बब्बल ने। और इस ओवर में क्या कुछ होगा, एक उम्मीद के साथ कप्तान ने एक बार फिर से गेंद सौंपी है अवतार सिंह को।
इनके पास बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं, लेकिन सीम अप डिलीवरी करते हुए सीम पोजीशन बहुत अच्छी तरह आई अभी तक। आप देखें अवतार गेंदों को देखिए, सीम का अच्छा इस्तेमाल किया है, गेंदें काफी लहराई है इनकी और इसका फायदा भी मिला इनकी गेंदबाजी में। 2 विकेट इन्होंने चटकाई है। ज्यादा गति देने का प्रयास नहीं करती, अपने लाइन और लेंथ को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा। हवा में गेंद, खिलाड़ी आ रहे कैच पकड़ने का मौका बन सकता था, बबल वहां थे, उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं किया। थोड़ा सा लंबी दौड़ आती है, रफ्तार से दौड़ लगाते तो शायद पहुंच जाते, एक और सफलता मिल सकती थी अवतार को। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, अच्छा शॉट खेला, गैप में खेला गया स्ट्रोक। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद को जब तक उठाया, दूसरे की कॉल की है, हारा में खतरा बना था और ये रन आउट की अपील की जा रही है। विकेट कीपर के द्वारा इसके अंपायर आकाश ने सिर को हिलाया दिया, यानी कि नॉट आउट है। बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित पहुंचने में कामयाब हो गए। 1-1, 2-2 रन के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश। इस बार अंदर लगने का प्रयास किया था अवतार ने, उंगलियां फेरी थी। अब देखें बहुत ज्यादा रफ्तार से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। इस बार खिलाड़ी से मिसफील्ड हुई, एक रन लेने का मौका। भूषण शेरावत और विश्वास चौधरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 विकेट गिर चुकी है। ये उठाकर खेला है, खिलाड़ी के हाथ में गेंद, एक और सफलता अवतार को मिलती हुई, ऊपर डाली हुई गेंद। अगर आप देखें अवतार ने जिस गति का इस्तेमाल किया है इस पारी में, उसी का नतीजा है, यहां पर एक और सफलता मिली है। ज्यादा गति नहीं दे रहे, क्योंकि बॉलर के पेस का इस्तेमाल करना चाहते थे। रुंगलियां फेरी थी अवतार ने एक बार, तो फिर से एक और सफलता इन्होंने अपने नाम की है। कमाल की गेंदबाजी की है, पिच के मिजाज को बढ़ाया इस गेंदबाज ने और उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाला है। और ढालने का परिणाम यह है कि एक समय मेटलाइफ बड़े स्कोर की ओर अपने कदम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उस पर अब काफी हद तक रुकावट, ब्रेक लगा दी है मर्सर के गेंदबाजों ने। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। शुरुआत अच्छी मिलती है, उसे बचाना भी आना चाहिए। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है तो आप मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं, और ये खामी नजर आई अभी तक मेटलाइफ की पारी को देखेंगे। ऊपर के बल्लेबाजों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अभी तक निराश किया है। 6 विकेट का पतन हो चला है, 106 रन बोर्ड पे महज। कुछ देर पहले की तस्वीर कुछ और बात बयां कर रही थी, पर अब तस्वीर जो बयां कर रही है वो किसी से छिपी नहीं है। ऑप्शन के बाहर फ्लाइटेड गेंद, कोई फुटवर्क नहीं था, जगह से खेलने की कोशिश, दूर से खेलने का प्रयास था। डॉट गेंद, बब्बल किशोर की गेंद, एक और डॉट गेंद। हम हमें लूप दे रहे हैं, गति नहीं दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है अवतार की या फिर बब्बल की। सिंगल इस बार जरूर मिलेगा, पर ये तीसरी गेंद पर सिंगल आया है। इस ओवर की पहली 2 गेंदें डॉट गेंदें, रटा है बबल का। मर्सर के कप्तान काफी खुश होंगे, जिस तरह की वापसी की जरूरत थी वो मिली है। इस बार चढ़ में डाली हुई यार कराने की कोशिश,
बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं बल्लेबाज मनदीप के पास। एक बार फिर से हवा में चूमती हुई गेम, फ्लाइटेड गेम, मिडिल लेग स्टंप पे आती हुई गेम को ऑन टर्न किया ऑन साइड में। स्क्वायर लेकर खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। एक रन लेकर अपना छोर बदला है 107 रन, बल्कि सिंगल के साथ 108 हो चला है। डॉट गेंद होती हुई बहुत ही किफायती अनुशासित ओवर रहा है बबल किशोर का। 3 ओवर में 19 रन देकर 2 सफलता इन्होंने हासिल की है। 13 ओवर का खेल समाप्त, 108 पे 6 मेट लाइफ। अगले कुछ ओवरों में एक बार फिर से माइक्रोफोन पर मयूर, स्वागत है आपका। It's not for chest or nose. 108 for 6. Softly played with both his hands. Will get a single. Not the way Metlife started actually. Anwar, I'm surprised actually. At one point, you never thought at least 4 wickets will be down. Half a side, now 6 wickets are down. Marsha have come back beautifully in this game. On the leg side, jabbed. Probably they'll get a couple of runs. Both the fielders giving a chase on the collision route, but that will go towards the backdrop for 4 runs. This went very slowly and cheated. Both the fielders were coming on to the collision route and on to the boundary for 4 runs. This will be welcomed with both the hands by Metlife, because as of now, they not only have to protect their wickets, but they have to get some momentum and some runs, and in the process, this healthy 4s and 6s will be welcomed with open arms for sure. 113 for 6 for Metlife. And I was coming back to the point at one point, I definitely never thought that they would be at this position. They were going so strong. Plays it very well. Hits in the middle of the bat. There is protection at the long on. Just a single, rotates a strike. Score moves for Metlife at 114 for 6. It, still a very good batting wicket, Anwar. And, but I don't know where it probably went wrong. On the offside, beautiful looking cover drive from the batsman. Rotates the strike, 115 for 6 for Metlife. And but I am sure there must be some chink in the armor that Marsha have found out of Metlife, and they have done it very beautifully. Way outside, off down, one bounce onto the man at cover. He was very lucky that that ball didn't had the legs or the power to carry to the man at cover, or else that would have been curtains for Bhushan. Onto his arc, and he does it very beautifully. Hits one of the trees just standing behind the banner for half a dozen. 121 for 6, and Bhushan Singh Rawat probably heard it from the commentary box. He got angry, and whatever it was, he threw the kitchen sink at it and races on to 24 not out of 20 deliveries, and the score after the end of 14 overs is 121 for 6 versus the Marsha. बाकी ठीक थी। वैसे ठीक। थैंक यू। हाँ, वो जरूरी है। You can hear the cheers from the dugout. Shot hai bhai, and you definitely know that how important these runs are at the moment, and plays it very well.
just hidden behind the trees. It is, I cannot see, and signal from the umpire Ashwini says that it has gone all the way along the carpet and onto the boundary for four. What a lovely cover drive and for the boundary, and the score is now 122 for 6. This will give him a good lot of confidence. Bhushan Sehrawat. This came on very slowly. He had to wait for ages for the ball to come to him. It came very slowly. He could have hit it anywhere across the ground, but he glided slowly towards the man at point. No runs being taken. Score remains on 126 for 6 for Metlife. Very short after back foot jabbed towards the man at sweeper cover. Will get a single, rotates the strike. 127 for 6 for Metlife versus Marsha. Bhushan Shehrawat 28 not out of 23. Mandeep. Again, a very nice cover drive. Each and every single that they're taking and rotating strike has been accompanied with cheers and clappings from their colleagues at dugouts. Everyone concerned know how important this is. At one point, they definitely knew. Flights the ball, was trying on, and it's given him by umpire Ashwini. He had other ideas. We never thought. I thought it was a swing and a miss to the covers, but he had the slightest of age outside his bat, and wicketkeeper took it gleefully to signal the end of the 7th wicket down. 128 for 7 for Metlife versus Marsha, and they are going down the. कीपर नेम क्या बोला? अभिनंदन है ना कीपर नेम? बैट्समैन क्या है? बेटा पहले बैट्समैन बताओ. और कितने बचे? बॉलर प्रवीण. Very good catch from the wicketkeeper. Avinandan had a very good presence of his mind. 128 for 7. Doesn't fly the ball way too much. This span very much and away from the batsman. He followed the line of delivery, but didn't follow it enough to get a bat to it. The score remains on 128 for 7 in 15.1 overs. And the overs are quickly drying up thanks to the spinners in play. Here's the next ball on the leg side. Have to wait for the umpire signal to take a single nonetheless. There is no backing. This is really not good throw. And thankfully, there is a fielder, but he needs to be very cautious. Wide, there's a wide and there is a single. So not good bowling, especially by a spinner. It looks like a crime if you overstep or if you bowl a wide. Very slower. It's a spinner and the ball is also spinned. It's not a bad batting track, but mind you, the spinners are doing a fabulous job here for the captain. 130 for 7 on the board for Metlife. Off the offs and trying to cut the ball. Again, the ball isn't coming onto the bat beautifully. They have to wait for ages, as I mentioned before. Difficult for the batsman. Flies the ball again, jabs, and that's what they have to do. Quick single, and probably literally waited the wicket keeper. He's on the floor, and 131 for 7. It was a very risky quick single, but Amit Yadav 1 not out of 3, Mandeep 5 not out of 7. Off the back foot, angles the bat towards square leg. You'll get a single. 132 for 7. Gives a strike. This is important. With singles and couples, it's also important to keep the momentum and the channel going. It's not only about the boundaries and sixes. They have lost 7 wickets.
So it's imperative that they bat well. Oh, that's very good bowling. It spun very well. Deceived the batsman. Oh, outside the off stump, and the ball kept on carrying its line, and that will bring the end of the over. 16 overs have been bowled. Metlife are 132 for 7. हाँ अब सुन के सो जाओ। फिर गुस्सा कर रहे हैं और कहें कुछ और कर रहे हैं कौन दा उधर लीड है तू तुझे आवाज आई किसी की 132 for 7 in 16 overs. 4 overs. For Marsha. Here is the first ball of the 17 over. Shot outside off stump. Tries to connect the ball. It bounces as much as he was expecting. Very good job from the wicketkeeper Abhinandan. He has already taken a very, very good catch to dismiss the last batter. So he's up on his task as a wicketkeeper, and ably supported by his bowler. Very well played. The ball swung a bit. There is protection at long on. Get a single. He'll rotate the strike. Score moves on to 133 for 7 for Metlife. A bit of a swing. He kept the ball till the last moment and angled the bat towards the man at long on. As I was mentioning, the singles are important also to get back to the game, especially defended very, very well. Saw the ball till the last moment. It's very, very important for both the batsmen to see out this 20 overs, as they have lost 7 wickets in pursuit of in pursuit of using the long hand. They might just perish and get all out before they allotted 20 overs. So it's very important that they play all the overs. Well played out the back foot, thick outside edge. They'll just get a single and gives the strike back to Mandeep. 134 for 7 for Metlife. ओ यहाँ बैठे कब उठे 134 for 7 for Metlife. You can't actually say who's at the driver's seat as of now. The defense plays it right back to the bowler. It sounded very well, but it actually hit the thick outside edge of the batsman right at the bottom of the bat, and that's the reason why the ball didn't have the timing nor the distance to go beyond the bowler. Score remains the same, 134 for 7 for Metlife. With very soft hands, 135 for 7 for Metlife, and that will bring the end of the 17 overs. गुजर रहा हूं यहां से भी गुजर जाऊंगा मैं वक्त में ठहरा के मर जाऊंगा और इस बार एक्स्ट्रा डाली गेंद निकाल दिया। गेंद फाइनल लेग पर जाती हुई बाउंड्री लाइन से गेंद को फील्ड किया जा रहा है। सिंगल लेने का मौका है। 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 135 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आकाश में थोड़े बहुत क्लाउड कवर नजर आ रहे हैं और ये शॉट ऑफ गेंद लेग स्टंप के बाहर एक बार थोड़ा फिर से थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, और यही वो लम्हा है बल्लेबाजों के लिए, ये रिवॉर्ड कह सकते हैं कि मौके प्रदान किए जा रहे हैं। एक बार फिर से फाइनल लेग पर गेंद जाती हुई। शैलेंद्र रावत गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी के 18वें ओवर की गेंदबाजी की जा रही है। 138 7 विकेट के नुकसान पे ऑप्शन के बाहर है। दूर से खेलने की कोशिश की थी, फुटवर्क बिल्कुल था नहीं, और यही कारण है कि गेंद को खेलना चाहिए था ऑफ साइड में, गेंद गई ऑन साइड में, ये फर्क रहता है।
एक मैच्योर बल्लेबाज और एक सिलेंडर में ये पोजीशन में आए, बढ़िया निष्पादन है, मिलेंगे 4 रन। स्कोर लिखा है कितने नंबर पे 144। एक बार फिर से ऑन साइड में फ्लिक किया है, मिलेंगे 4 रन। एक बार फिर से बढ़िया ओवर घटता हुआ। ऐसे ही बल्लेबाजी की जरूरत है। अमित यादव मनदीप के बीच एक अहम साझेदारी होती है। 148 18 के बाद 7 विकेट खोने के बाद 148 रन बनाई मेटलाइफ। एक समय से लग रहा था कि 200 का आंकड़ा छूना इनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों को बदलने में समय नहीं लगा। अप एंड डाउन की स्थिति नजर आई है, पर ये दोनों बल्लेबाजों ने जो भी किया है कमाल किया है। मनदीप 14, अमित 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी 2 ओवर का खिलाना शेष है। 148 148 आफ्टर 18 ओवर। लगता है स्पिनर परवीन आए गेंदबाजी करने के लिए, और इस बार फिर से कहते हैं मिलेंगे 4 रन। 2 खिलाड़ियों के बीच से सफलता क्या हो पाएगा जो रहता निर्भर गयों पर, मंजिल उनको मिलती है जो चलता अपने पैरों पर। 2 खिलाड़ियों के बीच से एक दूसरे को ताकते रहे और गेंद इस बीच दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर गई 4 रन के लिए। इसी के साथ ही तीसरा 50 रन भी पूरा होता हुआ 152 7 विकेट के नुकसान पे। अमित यादव 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही उपयोगी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम मेटलाइफ के लिए। इस बार ऑप्शन के बाहर कैची चलाई थी, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाए। हालांकि गैप बहुत बड़ा था। पॉइंट के खिलाड़ी को छोड़ दिया जाए तो शॉर्ट सेगमेंट के खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड जरूर नजर आ रहा है। और इस बार फिर से क्रॉस द लाइन मारने का प्रयास किया, बॉल पड़ने के बाद ऑप्शन के बाहर निकलती हुई। थोड़ी सी उछाल भी इस बार कम था रही है। अच्छी वापसी गेंदबाज प्रवीण के द्वारा। अभी तक प्रवीण ने 3.3 ओवर में 36 रन दिए हैं। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग आज का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। 19 ओवर की गेंदबाजी की जा रही है इस वक्त। इस बार चहलकदमी की है, बाहर निकले, गेंद को उठा के खेल रहा है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को उठा रहे हैं, सिंगल लेने का मौका है। 153 7 विकेट के नुकसान पे 7 गेंदें शेष बची है। टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज को छोड़ दिया जाए उसके बाद, और इस बार रिवर्स स्वीप किया है। यह बढ़िया शॉट है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। सर झुकाओगे तो पत्थर रेवता हो जाएगा, उसको इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया है, मैं भी मालूम है अपना हुनर, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। 19 ओवर के बाद 157 7 विकेट के नुकसान पे मेटलाइफ। 19 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 157 रन बने। थोड़ी सी राहत की खबर है मेटलाइफ के लिए। शुरू में स्टार्ट बहुत उम्दा दिया था, पर उसे पचा नहीं पाए, हजम नहीं कर पाए। कहते खाना खाना कमाल नहीं है, खाने को पचाना कमाल है। उसी तरह से आपको शुरुआत तो अच्छी मिली है, लेकिन उस पर ये देखिए सफल करके ऑप्शन के बाहर है और अपने अंदाज में रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज मनदीप। इनके जो मन में है, जो ठान लेते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। कर पाए या ना कर पाए, कोशिश तो कर रहे हैं। इस बार फिर से ऑप्शन पे गेंद, इस बार बहुत ज्यादा रूट नहीं था, फिर भी 1 रन लेने का मौका है। मनदीप और अमित यादव की जोड़ी इस वक्त क्रीज में मौजूद है। एक अहम साझेदारी होती हुई कप्तान की चिंता काफी हद तक दूर कर दी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। निचले क्रम के बल्लेबाज हैं ये, और क्या बढ़िया उपयोगी पारी खेले अपनी टीम के लिए। इस बार बल्ले का किनारा, 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 159 रन। अमित स्ट्राइक ले गए।
159 for 7 after 19.3 ओवर। इस बार कदमों का इस्तेमाल कवर ड्राइव किया है और 30 का डायरे के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज अमित के पास। इस सिंगल के साथ 160 रन, अभी भी 2 गेंद आनी शेष है। क्या 166, 166, 168 के पास पहुंचेगा ये डॉट गेंद और ये अपील आउट। बल्ले का सिरा है या फिर स्टंप आउट हुए, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से विकेट कीपर ने स्टंप विकेट स्टंप आउट होकर पवेलियन आते, क्रीज के बाहर थे बल्लेबाज अमित यादव। स्टंप क्रीज के बाहर थे। आखिरी गेंद आनी शेष है। पर मर्सर के गेंदबाज अवतार सिंह और उनके साथी गेंदबाज ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है। 3-3 विकेट चटकाए दोनों गेंदबाजों ने। ये अच्छा शॉट है, ये क्लीन हिटिंग है और मिलेंगे 4 रन। बहुत ही अच्छा संपर्क था बल्ले के बीचों बीच। 4 के साथ पारी को किया है समाप्त। 20 के बाद 164, 8 विकेट के नुकसान पे। अच्छा काम किया है आयुष चतुर्वेदी। अमित यादव 15 रन बनाकर नाबाद रहे। नजर डाल लेते हैं आज के मुकाबले की, दूसरे मुकाबले की पहली पारी के बैटिंग कार्ड पे नजर डालते हैं। किस तरीके से यहां पर विकेट का पतन हुआ है और बल्लेबाजों ने किस तरह का योगदान दिया है इस पारी में। मयंक टॉप ऑर्डर के सलामी बल्लेबाजों पारी का आगाज करते हुए 29 रन की पारी खेली। बबल किशोर की गेंद पर आउट हुए थे वैभव के हाथों द्वारा। 29 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना, 7 चौके लगाए। पावर पे बाउंड्री लगाई है, मयंक ने 7 चौके लगाए। उसके बाद उनके साथी जोड़ीदार वीरेंद्र कुमार ने ताबड़तोड़ रन बटोरे हैं। चौके छक्के के बल्ले से देखने को मिले। 20 गेंदों से 43 बनाए, 4 चौके 3 छक्के लगाए हैं। बोल्ड हुए थे अरुण शर्मा की गेंद पर और उसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार विकेट अंतराल पर राकेश कुमार एलबीडब्ल्यू बोल्ड, अवतार सिंह 8 रन बनाए। गौरव गर्ग, टॉट, अरुण शर्मा बोल्ड, अवतार सिंह 1 रन बनाए। 6 गेंदों का सामना किया भूषण शेरावत। कॉट बिहाइंड विकेट कीपर अभिनंदन बोल्ड, बबल किशोर मेहरा। अविनाश सिन्हा, ऋषि कुमार बोल्ड, बबल किशोर 3 रन बनाए। विश्वास चौधरी, चाहत सैनी बोल्ड, अवतार सिंह 1 रन बनाया। मनदीप स्टंप, विकेट कीपर अभिनंदन बोल्ड, शैलेंद्र रावत 19 रन बनाए और अंत में अमित यादव 15 रन बनाकर नाबाद रहे। आयुष चतुर्वेदी 4 रन बनाकर नाबाद रहे। बॉलिंग विश्लेषण की बात करें, सबसे सफल गेंदबाज अवतार सिंह 4 ओवर में 25 रन 3 सफलताएं के नाम। बबल किशोर मेहरा 4 ओवर में 26 रन 3 सफलताएं भी हासिल की। अरुण शर्मा ने 4 ओवर में 30 रन लेकर 1 सफलता और शैलेंद्र रावत ने 4 ओवर में 35 रन लेकर 1 सफलता हासिल की है।
बार फिर से स्वागत है आपका दाफा न्यूज प्रो कॉन्फ्रेंस लीग मैं सेंटर लाइव पे मैनर सिटी के मेरे साथ में कमेंटेटर मयूर, आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के इस दूसरे मुकाबले की, मर्सर वर्सेस मेटलाइफ के बीच एक बेहद अहम मुकाबला। टॉस जीता मेटलाइफ के कप्तान ने, शुरुआत तो उनका दिलाई दोनों ही आरंभिक गेंदबाज में मयंक और वीरेंद्र के बीच एक अहम ताबड़तोड़ शुरुआत रही है। किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद विकेटों का पतन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? Yes, initially MetLife they have started with a flurry of boundaries. At one point I was actually telling during the commentary that it was like looking at a highlights package. Just 4 the 6s I could see the excitement because you took off the commentary, the Hindi commentary, and after that my English one, and then the middle overs that produced runs, and then the flurry of wickets. It seemed as they won't be able to even cross 130, 140, but they have ended up with 160 odd on the board for the fall of 8 wickets. They have come back very, very well. MetLife, I think pressure is back on Marsha now, and we have to see how the batsman responds to the total. अब मयंक की बल्लेबाजी को देखते हैं, मयंक ने 7 चौके लगाए हैं। मैक्स 14 पावर प्ले बाउंड्री की अगर बात की जाए तो मयंक ने सबसे ज्यादा 7 चौके लगाए। अपनी पारी में 29 रन की पारी की महज 16 गेंदें खेली। किस तरीके से मयंक की पारी को आप देखते हैं? पहले तो मैं ऐसे देखूंगा that he needs to be given double max protein. I think triple max protein would be enough. And but yes, it was more than a power packed innings. He saw the ball very, very well. It was not an easy wicket to bat on initially, though it's a good wicket to bat. But the ball came on very slow thanks to the spinners. But when he hits the bat, it hits very, very well, right to the covers on the onside, on the leg side. He did it very, very well. And so I forgot exactly the amount of runs, but he did it very well. I think around 5, 6, 4 hit, and he have done it very well. बिल्कुल। और बात करें वीरेंद्र की, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना, 3 चौके 4 चौके 3 छक्के लगाए इन्होंने अपनी पारी में, और वीज ऑन मैक्सिमम सिक्सेस के अवार्ड में अपने आप को उस रेस में शामिल कर लिया और अभी तक वो ऊपर रहे सबसे। वीरेंद्र की बल्लेबाजी की देखें आप, जिस तरीके से इन्होंने मिडिल किया गेंद को, जिस तरह से स्क्वायर का विकेट शॉट लगाए हैं, कट किया है, पुल किया है, बहुत ही उम्दा लय में नजर आ रहे थे। इनकी पारी को किस तरीके से आप देखते हैं? We actually started with V's on toss the boss. They won the toss. They will take to the bat, and now actually the batsmen they have almost capitulated on the wicket itself, and he have done justice to his batting. He started off pretty slowly, as I could remember, but then he started gave him ample lot of confidence, and then actually helped the others to capitalize on that, and the score has moved on to 160 plus. दोनों को जोड़ने जाए तो बबल किशोर जिन्होंने गेंदबाजी में अपनी गेंदबाजी से आग लगाई है और एक के बाद एक उन्होंने 3 विकेट ली। उसके बाद दूसरे चौथे से अवतार ने भी अपना अवतार दिखाया है। दोनों गेंदबाजों के बीच जो जुगलबंदी नजर आई, 6 विकेट इन्होंने दोनों गेंदबाजों ने मिलकर के चटकाए। अगर आप देखें दोनों ही इकोनॉमी रेट पे नजर डालें तो दोनों के बीच एक आगे बढ़ने की होड़ नजर आई है। मयूर देखें 4 ओवर में 26 रन, 3 विकेट बबल किशोर के नाम है, अवतार के नाम 4 ओवर में 25 रन, 3 विकेट। दोनों के बीच जो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है वो बहुत ही बेहतर रहा है और इसकी वजह से मर्सर के पास इस मुकाबले में आगे बढ़ने का मौका बनता दिखाई दे रहा है। Yes, and if not for the bowlers, I'm sure the score must have crossed around 200 also. They have come back very well, both the pacers and the spinners. I would say the spinners actually helped the pacers to go to the rhythm and then bowl, and the result that they have cut short less than 71-60. The score is still very stiff it's not very stiff, it's little tough to chase it, but yes, the both combination of the pacers and spinners have really put the brakes on the scoring, and I think yes, probably if not for them, the score might have gone above 180, 185 plus. 164 रन बोर्ड पे नजर आ रहे हैं और ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अभी टोटल तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा टोटल जरूर है। यहाँ पर मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर धैर्य की परीक्षा होगी, जिस तरीके का मुकाबला है, जिस तरह के पीछे जिस तरह का एनवायरमेंट अभी तक नजर आया है, अगर आपने थोड़ी सी जल्दबाजी की तो शायद आपको पछतावा हो सकता है। Yes. So every time you see, because it's a T20 format, it's not Test cricket.
you're not taking it session by session. But I could remember by the blink of an eye, I could read the figures, 10 overs were done. So you cannot take it for granted. Every place that you've earned through your hard work. There are others there also in the lining. So when you capitalize in this moment, you never know you're going to play in the next league or even the next match of this league itself. So every match is an opportunity for each and everyone who's there for the team, and they definitely need to pounce on the opportunity, deliver. The bowling has been done. Now it's up to the batsman to do the task, and yes, grab the opportunity, cement their place in the team, and come all guns blazing. Yeah, that's बिल्कुल कोशिश जो है करते रहना पड़ेगा। आप कहीं भी छोटी सी अगर आप गलती करेंगे तो आपको आपके हाथ से मुकाबला निकल सकता है, लेकिन आपकी छोटी छोटी कोशिशें आपको आगे बढ़ा सकती हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं दोनों टीमों का खेमा इस वक्त अपनी तैयारी में जुटा है और 165 रन का टारगेट है मर्सर के सामने। मर्सर की गेंदबाजी जिस तरीके की रही, वापसी करना आसान नहीं होता जब आपके खिलाफ शुरू में बड़े शॉट देखने को मिले। गेंदबाजों का मोबाइल गिरता है, लेकिन यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी और तार बबल की और साथ ही गेंदबाजों की, जिन्होंने अच्छा कमबैक किया और टीम मर्सर को एक मौका दिया है। 164 रन पे रुका है मेटलाइफ को। ये बड़ी अचीवमेंट रही है मेरे नजरिए से, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी गेंदबाजी का उदाहरण दिखाया है। Yes, and seriously, we always have this difficult task of when the batsmen are going hammer and thinking shots I can see your poetry has actually just kept on going for them, but suddenly they were applied breaks the bowlers and restricted the runs flow. So bowlers definitely they play, and they sometimes do a very thankless job. We forget sometimes the umpires do a very good job. There's one wrong decision, say umpire wants all those stuff, but umpires they've done a fabulous job. And the bowlers have done very good. So this T20 is actually tailored for batsmen, but the bowlers have also come out very well. बिल्कुल वक्त हो रहा है वो मैं सेंटर लाइन से बिना होने का और चलते सीधा अपनी टीम के साथ दूसरी पारी का आगाज होने वाला है। मेटलाइफ के टीम के साथ मैदान पर उतरे और मर्सर के दोनों आरंभिक बल्लेबाज तैयार हैं। मैं सिद्दीकी अपने साथी कमेंटेटर के साथ चलता हूँ सीधा मैच का आपको देखा सुनाने के लिए। लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। थैंक यू। We are back to business here at the DCL Sports Complex in Noida. Target is 165 for Marsha. They have done a fabulous job with the ball. Now it's up for the batsman to deliver with the bat. We'll see very, very soon. The weather has gone a little gloomy. There might just be a touch of rain, but fingers crossed for the rain to shy away until the match finishes. It's all sea of blue as of now on the pitch. As both the batsmen and all the 11 fielders converge on the field, get the field settings right, and we'll go one up against another one.
ये ऑन है ना, ये ऑन है, हाँ ऑन ही। Hello. So all set here for the first ball to be bowled in this chase for Marsha. We have the lefty. He's a tall, lanky lefty, right on the middle. Batsman कौन है? Babal Kishore is the batsman who will face the first ball, and Akhil is the non-striker. Bowler कौन है? Shailendra has the ball in his hand. He will start the proceedings here for Metlife. Then the wicketkeeper has a sleep for his company. There is a sweeper cover. There's a cover. There's a mid on, mid off. Here's the first ball. Right on the money, little bit of a swing on the leg side, gets off the mark immediately. Hits a stump, gentle appeal towards the square leg umpire, but he negates it. Off the mark immediately, 1 for no loss for Marsha. Little bit of swing, little bit of hint of swing, I would say, but he played very carefully on the leg side and got off the blocks very quickly to rotate the strike. Akhil Singh will be on strike. He's a righty. Lefty, righty immediately. Looks like the pair of Saurav Ganguly and Sachin Tendulkar on the middle. Lefty-righty combination. Always upsetted the opposition. And will this composition, will this partnership work the way for Marsha versus Metlife? We'll wait and watch. Here will be the second ball from Rakesh Kumar to bowl to Akhil Singh. Here's the second ball. Right on the boundary, it's in the air, fielder! Oh, it just hit him, touches his finger and about to go to the boundary. Both the fielders giving it a chase. Probably didn't judge the ball too well. The bowler is a touch disappointed. It was in the air for a long, long time. He probably got off the blocks a little slower. He did drive well right. It did touch his finger, but it evaded him and was slowly going to the boundary, but it drives it. So, couple of runs for Akhil Singh. His heart must been in his mouth for a while, but he survives for another day. In the air again, gets the fielder onto the boundary in a flash for 4 runs. He's living dangerously, Akhil Singh. First a missed chance, and now in the air again, but towards a backward point for 4 runs. He needs to be little cautious while playing those uppish stroke. This offside is heavily fielded, but he has guided the ball very, very well onto the boundary for 4 handsome runs. The score is now 7 for no loss. Very, very wide outside off stump. Umpire Ashwini Kumar has no hesitation in extending his arms. Score moves on to 8 for no loss. A very good start for Marsha. Many things happening in the very first over itself. Taken on the full over the bowler's head, but will just get a single. Didn't have enough energy while it left the bat. And had the timing been right from Rakesh Kumar, he could have
taken it, but it just went over his head, and 1 run will be taken. 9 for no loss. The lefty Bubble Kishore Mehra is on strike now. He has just faced 1 ball, got off the mark. Very well bowled. That's the channel, but ball just bounced little more than he was anticipating, Bubble Kishore. But that's a very good line to finish the over. Oh, sorry, beg your pardon. 5 balls have been bowled. Just 1 more delivery remaining. Got very excited. That was a very good delivery on middle and leg. Bubble Kishore wasn't expecting. He was on the front foot. He was committed on the front foot little early, and the ball just bounced and hit his forearm. No runs being scored, and the score remains on 9 for no loss. 1 legitimate delivery remaining from Rakesh Kumar. Very well bowled on the leg side. Probably could have been touched on middle enough, but nonetheless 1 run will be taken. He keeps the strike. The score after the completion of first over is 10 for no loss for Marsha, chasing a target of 165 versus Metlife. This is the second match of this weekend, for Saturday, of the Dafa News Pro Corporate League. We again take this opportunity to thank our sponsors, Dafa News, the principal sponsor of this prestigious Pro Corporate League Season 11, and also by VJohn, our grooming partner, IFCO, KI Wires, and our energy bar partner. And last but not the least, SG Ball, a name which is a legend in itself. Next. Very good ball, very good ball. Little bit of a swing in the air. There's a slight breeze. You can see the dark clouds little looming around on the sky. It's not threatening at the moment. The sun is playing hide and seek between the clouds. And for no loss. He was trying to swing. It was also out of his crease also. The wicketkeeper didn't collect it very well. Had he collected, he could have probably hit it back to the stumps. But everything happening, there was a bit of a swing. He was trying to swing. It didn't connect. The wicketkeeper fumble. And but no runs. The score remains on 10 for no loss. Ayush Chaturvedi doing it very well. Round the wicket to the lefty. He's not been probing too much on the offside. He's concentrating mainly on the middle and leg. But he has to be very careful for the leg side. The leg side again, as I was saying. I'm sure this must be a leg by. Didn't hear any sound. Yes, up goes the right leg of Ashwini Kumar, signaling a leg by. The score moves on to 11 for no loss. And strike will be now to Akhil Singh. 7 not out of 3 deliveries. The righty and the lefty both can disturb. As I was mentioning earlier, the pair of Saurav Ganguly and Sachin Tendulkar, it made life so much hell for the opposition. Can this board do the same for them? Very good shot, and this will go to the boundary. Doesn't require a second invitation when it was played obviously through extra cover. And when it comes off the bat of Akhil Singh, it stays hit. He moves on to double figures now. 11 not out of just 4 deliveries. And score moves on to 14 for no loss. This is good batting. Probably the wind has allowed the ball to go the distance also. Plays it so well. The Sox were into the crease for 6 runs. At one moment, we definitely thought there might be a fielder. There was no fielder. There was just the branding of SG, and it had hit the trees directly. Remember playing EA Sports, Electronic Arts Sports game, with one leg up.
He has definitely imbibed a shot of confidence and it connected so beautifully and into the trees for a handsome 6 runs. यहाँ पे स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा है. Again a very good shot, confidently hit. This time one bounce and into the same holding of SG for 4 runs up. Really not good bowling. Concentrating on the middle and leg, and he has been hit for a 6 and then a 4. Not been a very good over to end the proceedings. 2 overs have been bowled, 24 for dollars for Marsha. They are going at a run rate of 12 runs per over. And there's still a long way to go to chase the target of 165. But both Akhil Singh and Babal Kishore Mehra, they have started off very well for Marsha. They definitely, Metlife, need to put up something out of the hat to put the wicket column from 0 to 1. It's in the air, just short of the man at first step. Confusion, both the batsmen one end. And that's going to be a run out. Commentator's curse, it might be. I was just telling about rotating from 0 to 1 and it has happened immediately. The very next ball. Confusion, who's run out, but definitely one has to go back to the pavilion. And in the end, righty Akhil Singh, he has to take the long walk back to the pavilion. He'll be distraughted with himself. You can see the way he is hitting his bat onto his bat. But the man in the other blue, they won't complain, they will celebrate this wicket. Marsha are now 24 for 1 and Metlife gave their first wicket. There was confusion. There will be a lot of talking going on. Why it happened, how it happened. But those talks can be done right after the match. Or if they get that wicket. But at the moment, it's 24 for 1 for Marsha. And not exactly the way they were looking out for. You have different wicket, you have different modes of dismissal. But this dismissal is something which definitely hurts the most when you have communication error. There's an error in communication. Both the batsmen at the same end. It looks like a comedy right in the middle. And a little bit of fumble from the bowler. But eventually he kept his calm, collected the ball and whiff broke the bills. And first wicket into the kitty of Metlife. 24 for 1. 24 for 1 for Marsha. प्रिंसिपल स्पॉन्सर सिर्फ एक ही होता है, हमेशा दो नहीं होता. वो प्रिंसिपल है. मैंने उस दिन पूछा था, प्रिंसिपल है. एक बार क्लियर कर लेना, क्योंकि ना प्रिंसिपल टाइटल हमेशा एक ही होता है, दो तो हो नहीं सकता. हाँ चलो बोलता हूँ अभी. अब स्कूल तो खत्म हो गया सर. 25 for 1. Babal Kishore has been joined by Vaibhav Kumar yet to face the ball. First ball to be delivered. From Rakesh Kumar on the leg side. There's no protection. Fielder giving a chase. Ball is running away to the boundary. We will wait for the umpire signal. Is it off the bat or off the legs? It's a leg by. So Vaibhav Kumar yet to get off the mark, but 4 runs will be added to the total of Marsha. The score now moves on to 29 for 1. You'll have to be very careful with the line and length when drifting down the leg side, as there is no protection. The fielder is up on the boundary. And the man from Gully giving all the chase, but he didn't have the legs enough in comparison with the ball. On the legs again, this is really not good bowling. He will be frustrated, and I'm sure the captain will be frustrated as well. The score now moves on to 30 for 1. 2 back-to-back balls on the leg side. One was a wide and then a 4, and then again wide. You have to be very careful. Got it very well. Didn't come exactly on the bat. Take outside edge towards the man at deep cover. 1 run will give the strike to Babal Kishore Mehra.
who's betting on 7 not out of 11, needs to get his concentration back. He has just lost his partner in a comedy of error of run out, but he has to keep that back of his mind and concentrate now. Very well bowled, but little slower off the air. Allowed lot of room and opportunity for Babal Kishore to go on the back foot and cut it, but thankfully no runs being scored. The score remains on 31 for 1 for Marsha. This is exactly the line that he needs to touch a little bit more uppish to the batsman who do no harm. On the leg side, just evades the bowler. Probably got an inside edge. Appeal for a run out, but you are safely inside the crease, Babal Kishore. So many things. You can see a sea of blue converging around the batsman. There's so many things happening. It got really, really confused. There was a run out in action. There was a striker going back to the non-striker. There's an appeal. It looks so good. This is a game of cricket that we definitely love to see so many things in action, but it actually confuses the batsmen. But eventually, they sustain to get 1 run, and the score moves to 32 for 1 at the end of 3 overs. और एक ओवर कर लूं क्या कर लूं? Now change in voice from English to Hindi. Anwar Siddiqui will wear his traditional hat and will give the mic to Mr. Siddiqui for his poetry in action. Mr. Siddiqui. ये दूसरा वाला. शुक्रिया मयूर अतीत के बाद 32 विकेट के नुकसान पे मर्सर 164 के जवाब में बल्लेबाजी कर रही है. बबल किशोर वैभव कुमार की जोड़ी इस वक्त क्रीज में मौजूद है. ऑफ स्टंप पे गेंद अंदर आती हुई गेंद अपने से दूर खेला. बहुत अच्छे से नहीं खेल पाए, पर देखा जाए तो 32 रन बने अभी तक. 30 बल्लेबाजी की गई है अभी तक मर्सर के बल्लेबाजों के द्वारा. यह अच्छा का शॉट है, जबरदस्त स्टोक था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे डी पे. पॉइंट बाउंड्री से गेंद उठाया जाए, सही टाइमिंग. चौथे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है. यहां से 132 रन की और दरकार है मुकाबले को जीतने के लिए. ये अच्छा शॉट है, फायर खिलाड़ी के हाथों से गेंद निकली है बाउंड्री के बाहर. शेयर के लिए ये कैच पकड़ना चाहिए था. आप ऐसे कैसे छोड़ेंगे तो मैच भी हाथ से ऐसे ही निकलेगा. आप कैच पकड़ेंगे तो मैच भी पकड़ लेंगे, लेकिन यहां पर कैच ड्रॉप किया है और दावत उड़ाने का मौका दिया है बल्लेबाज को. 39 विकेट के नुकसान पे ये बड़ा मौका था. विश्वास चौधरी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती थी. डीप में खिलाड़ी को इसीलिए तैनात भी किया था. बाउंड्री लाइन से बिल्कुल सटे हुए हैं, उनके हाथों में गेंद समाई थी. और मुश्किल कैच नहीं था, लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाया अपने आप को और गेंद सीमा रेखा के बाहर. ये बॉल पड़ने के बाद अंदर क्यों रही? फुटवर्क अच्छा नहीं था, पांव अच्छा चल नहीं रहा है. अभी तक पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की खेल का मैंने कंपैरिजन अभी तक जो किया है, जो मेरे नजरिए से बल्लेबाजी हुई है, नितिन भारद्वाज ने जो क्लास दिखाई थी अंतिम हफ्ते में, 91 रन की पारी खेली थी नितिन भारद्वाज ने. उनकी बल्लेबाजी में वो क्वालिटी नजर आ रही थी, वो इंटेंट नजर आया था जो एक परिपक्व मैच्योर बल्लेबाज की बल्लेबाजी में देखने को मिलता है. आप कुछ पारियां खेलते हैं, ये हवा में गेंद है,
एक रन जरूर लेने में कामयाब होंगे। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 का ये मुकाबला है। प्रिंसिपल स्पॉन्सर एसजी, नाम है भरोसे का। अभी तक 41 रन बने हैं। ये वल्गेशा में खेला था, एक और बार छलांग लगाई। हो क्या रहा है गेंदबाज के साथ? शायद उनका भाग्य उनकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन जिगरे वाले खिलाड़ी है, हिम्मत नहीं हारते। प्रयास किया जा रहा है। 4 के बाद 42 पे 1 मर्सर। अभी तक देखा जाए तो पहली पारी में पावर प्ले बाउंड्री लगाई थी मयंक ने, 7 चौके लगाए थे। शुरू में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी, पर अंत में वीरेंद्र ने भी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था। 4 चौके 3 छक्के की सहायता से 20 गेंदों से 43 रन की पारी खेली। और आज के इस मुकाबले में अगर आप आकलन करेंगे तो आप वीरेंद्र कुमार की पारी का आनंद जरूर उठाएंगे। कैसा? और यहाँ पर सोच को बदलना पड़ेगा तुषार। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इस बार गेंद बढ़िया ग्लांस किया है, फाइल की दिशा में गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए 4 अंक। हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, उसने इंसान को मिट्टी की भी सूरत दी है। चाहे तो हम बात करते हैं तेरी उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद क्रॉस लाइन मारने की जब जब कोशिश की है, बल्लेबाज अपने आप को परेशानी में मुब्तला पाए हैं, पर उसके बावजूद आपको गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करने की जरूरत है। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यह ऑफ स्टंप पे अच्छी गेंद उछाल लेती हुई। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर यह हवा में खेला गया। स्ट्रोक मिस टाइम है और ये कैच पकड़ लिया है। ये स्मार्ट कैच है। ये इसको सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स हो सकता है। सामने की ओर लुढ़कते हुए कैच पकड़ा है, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। गौरव गर्ग ने वीरेंद्र कुमार को सफलता मिली है। वैभव कुमार आउट होकर पवेलियन आते हुए 46 पर 2। इतना आसान मुकाबला है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। 165 रन आपको जरूर नजर आ रहे हैं, आपके ज़हन में शायद ये बात जरूर हो। पर अभी तक खेल बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। 5 ओवर का खेल प्रगति पर है। 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा मौसम ने करवट बदली है। हवाओं के साथ आकाश में अब धुंधले बादल नजर आ रहे हैं, पर यहां पर संकट के बादल मर्सर के ऊपर थोड़ा सा मंडराने शुरू हुए हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं। 46 रन। वैभव कुमार 12 रन बनाकर ठीक है। ये अच्छी गेंद फिर से अपील होती हुई विकेट कीपर अपील की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए इधर गेंद शॉर्ट टर्नेट पर जब तक उठाई जाए 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 47 2 विकेट के नुकसान पे। अभी इस ओवर के बाद भी
रहेगा शेष, जहां पावर प्ले के दौरान दो ही खिलाड़ी तीसरे के बाहर रहेंगे। और पावर प्ले का फायदा उठाया था पहली पारी में मेटलाइफ के दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद जो पारी लड़खड़ाई तो फिर उठकर खड़े होने में काफी दुश्वारियां हुई हैं। आप गिरते हैं, उठते हैं, चलना सीख जाते हैं। अभी तक 47 रन बने हैं। विजॉन कूलेस्ट प्लेयर, विजॉन मैक्सिमम सिक्सेस अवार्ड, तमाम पुरस्कार है इस टूर्नामेंट में। ये अच्छी गेंद ऊपर डाली हुई गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, रन के लिए निकलना चाहते थे, वो तावलापन भारी पड़ सकता था। नॉन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज ने मना किया, समझदारी दिखाई, क्योंकि बहुत ही चुस्त दुरुस्त चपल फुर्तीले नजर आ रहे थे मेडॉफ के खिलाड़ी। उन्होंने जल्दी से गेंद को फील्ड करके थ्रो करने का इरादा बनाया था, और इधर नॉन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज ने मना कर दिया, साफ गोई से इनकार कर दिया कि हम नहीं आने वाले हैं। 5 के बाद 47, 2 विकेट के नुकसान पे मर्सर। आने वाले 15 ओवर का खेल शेष है। चिराग देख के मेरे चल रही है हवा, मेरे जोश को देख के मचल रही है हवा। इरादे जो बना रहे थे मेरी बर्बादियों के, उन्हें क्या पता था इन हवाओं में नेवर की शुरुआत, पहली गेंद पर सिंगल, 48 रन, 2 विकेट का नुकसान में भी 50 रन, 2 रन दूर है। मर्सर, ऋषि कुमार और बबल किशोर बल्लेबाजी करें। बबल किशोर ने गेंदबाजी बहुत ही उम्दा की है इस मुकाबले में, लेकिन अब बल्लेबाजी में बीड़ा उठाया, 10 रन बना के बल्लेबाजी करें, 17 गेंदें खिली हैं, थोड़ा सा समय जरूर ले रहे हैं। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला, कुछ करते हुए ज्यादा जोर नहीं लगाया, सिंगल के साथ अपना छोर बदला है, निगाह जमाने का प्रयास किया है। बबल किशोर ने दूसरे छोर पर 2 विकेट गिर चुके हैं। ऋषि कुमार 2 पे बल्लेबाजी करें, स्ट्राइक ले रहे हैं इस वक्त अमित यादव। उनकी गेंद इस बार हल्की सी अपील, गेंद को मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, पैड से टकराने के बाद बॉल की गेंद उठाया, वापस दिया है। डीप विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है ऑन साइड में। इस बार बल्ले का सीधा रहती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड पे जा रही है, एक रन लेने का मौका। दोनों बल्लेबाज एक 2 रन के साथ अपने कारमा को आगे बढ़ाते हुए 50 रन पूरे होते हुए 50 रन 2 विकेट के नुकसान में 5.4 ओवर के बाद 50 रन बने हैं। इस दौरान 2 विकेट भी गंवाई है मर्सर ने। ये ऑफ स्टंप में गेंद, और बहुत ही बढ़िया शॉट मिड स्पेल के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। अच्छा संपर्क था, बढ़िया निष्पादन इस वाले के ऊपर से 6 रन के लिए। बबल किशोर आखिरकार अपनी खामोशी को तोड़ा है, अपने सब्र को
खत्म किया है इस शॉट के साथ। 6 के बाद 56 विकेट का नुकसान पे मर्सर। अगले कुछ ओवर में क्या कुछ होगा, माइक्रोफोन पर एक बार फिर से मेरा स्वागत है। आगे मैच बॉल आगे ले लो। 56 for 2 in 6 overs. Thank you, Anwar. You did very well during your quota of in the commentary. Voice. Bubble Kishore Mehra, 70 not out of 20. Giving companies Rishi Kumar, 3 not out of 4. Plays was trying to hit the ball very, very hard. मुझे ना ऐसे खड़े होके भी करने में अच्छा लगता है ऐसे। But straight back to the bowler. Trying to cut the ball a little bit slower in the air. Fumble by the wicketkeeper also. Couldn't connect it. Score remains 56 for 2. Very, very slow. 2 different deliveries that we have seen here. And but this time the result is the same. Dot ball. Huge appeal. Dreaded finger of Mr. Ashwini goes up. Non-striker is questioning the umpire, but his decision remains the final. And the batsman didn't take much time to trade back to the pavilion, and the man in the other blue, they will definitely celebrate the needed wicket. And the third wicket is down here, 56 for 3. For Marsha, as soon as the ball hit the pad, everyone went up in unison, and as soon as it hit, everyone knew that the death knell was coming very soon, and of course the finger went up immediately. It didn't take much long for the umpire, and probably was trying to play off the back foot, and that resulted in the ball. Ball hasn't been coming up off the bat very well, and we were always saying that Lip to be very, very careful while playing with this ball on the back foot, and that has again picked up a victim, and the victim was the third wicket of Marsha, 56 for 3 versus the Metlife, chasing a target of 165. They've lost 3 wickets. Little tough going as of now. But Virendra Kumar, you'll be very, very happy. 2 wickets for 5 runs, 1.2 overs. Flights the ball, defense very, very well off the front foot towards cover. And 3 more legitimate deliveries remaining. He'll be off the back foot again. Of course, the right finger again. There's a criminal to be coming on the back foot. You have already seen a victim of the same delivery, and you have committed the same mistake again, and you have to go back to the pavilion without scoring. Lalit Singh will be disappointed, and why not? You have committed the same scene of going on the back foot, and everyone around him went up in unison, and Ashwini Kumar, beg your pardon, didn't have any hesitation to raise up the dreaded finger to signal the 4th wicket for Marsha. 56 for 4 in 6.4 overs. And Metlife, they are right in the back, right into the game. And what a good wicket this is. Virendra Kumar, he has picked up 3 wickets by conceding just 5 runs off his 10 balls that he has bowled. 2 wickets already in this over.
And he has been the destroyer in chief for Metlife versus Marsha. And he will be very, very happy if he can pick up a wicket or so. Probably a hat-trick might give him a lot of confidence, but I don't want to comment to discuss again. But 56 for 4. Nice ball again off the back foot, gracefully placed, gets off the mark immediately. Will give the strike to Babal Kishore Mehra. And this is again an overthrow. He will get the strike back. So 2 runs of the very first ball that he has faced. Gracefully played off the back foot. The ball did come onto the bat very well. And that will finish the over. 7 overs have been bowled. for 4 ना? Score 58 for 7 over. नहीं यहाँ पे घूम नहीं रहा है. लास्ट बॉल पे 2 ही रन लिया ना. 60 होना चाहिए. $50. 7 overs have been bowled. 58 for 4 for Marsha. Bowler नहीं bowler. Outside off stump, trying to slash not to the pitch of the delivery. He's looking at the umpire as if like pleading, please extend your arm. But that was well within the line. Outside off stump again, was trying to repeat the shot. It was looking, it's like looking at the replay of the first ball. 2 back-to-back balls without conceding a run. Good ball outside off stump. Moves away again outside off stump, repeating. It's a hat-trick of dot balls in the same area. Really not to the pitch of the delivery is Sahat Saini. Almost 2.5 of his stumps are exposed. Amit Yadav again. Ball, very, very good ball. He deceived him off the flight. 4 very good deliveries for Sahat Saini from Amit Yadav. He is playing foolish here. Outside off stump again, Dave's trying to get off the mark, but he has to go back to his crease, back to his home, a sweet home. But Amit Yadav has been bowling very, very well. He has conceded 9 runs of 11 balls, but this is a very, very economical over for Amit Yadav. Cuts off the back foot, will just get a single. And now the score moves to 59 for 4 after the end of 8 overs. Chasing a target of 165 versus Metlife. Babal Kishore Mehra, 18 not out of 26. Chahat Saini, 2 not out of 2. Still 12 overs to be bowled. A lot of homework to be done. Flies the ball. Appeal for probably there's a chance for stamping had his back foot just gone up. But he did very well after not being able to go to the pitch of the delivery to have put his back foot right on time. Very, very slow in the air. Again, now he was trying to sing appeal to the umpire. But he negates it, Ashwini Kumar. So 2 back-to-back dot balls from Virendra Kumar. Pressure already on the batsman. Good ball. Flighting the ball again, a little quicker in the air. On the back. Oh no! Chassis makes a fielder at the first left. Would have been a very, very good catch had he taken that catch. But a couple of runs in the TT for the batsman. Score moves on to 61 for 4.
was trying to be cheeky, but in the process, he could have just given away his wicket. But that would have been a very, very good catch. Had he taken that first slip, looked off came off very well. But there was protection at third man, so just a couple of runs, and the score is now 61 for 4. Plays it well, dabs it well, communicates very well. Immediately off the block is the non-striker, rotates the strike, gives it to Babal Kishore Mehra. Score now. Sorry, beg your pardon. Chahat Saini was the striker, gives Babal Kishore was the striker, gives it to Chahat Saini. He will be facing the third ball. And after back foot reasonably played, watch the ball till the last moment. A very quick single. Babal Kishore comes back to strike, batting on 21 not out of 30. And the rotation of the strike is important. Babal Kishore would be aiming to get the majority of the strikes here because he has played 30 deliveries and was trying to cement his position in the crease. And last ball from Virendra Kumar. Very, very good ball. Oohs and ahs on the pitch, and that will bring the end of the over. 9 overs have been bowled. Marsha are now 63 for 4. They need 102 more runs to win of 66 deliveries. Yeah. 63 for 4 in 9 overs. Babal Kishore 21 not out of 31. Chahat Saini 3 not out of 3. 102 more runs required. So a lot of homework to be done here for Marsha. They did start off well, but have lost 2 wickets in 1 over. Let us pack them a bit on the back foot. Appeal, and the umpire has no hesitation in lifting his finger again. 5th wicket down for Marsha, half of the side now back in the pavilion. 63 for 5 for Marsha. Babal Kishore Mehra has a word or two to Chahat Saini, but there is no point now of discussion. Probably they can do justice when they go back to the pavilion. And Babal Kishore is losing his colleagues at the other end. Left-handed on 21, not out of 31. 63 for 4, and Virendra Kumar, guess what? He is the culprit, and he is the chief destroyer here for Marsha. It's Amit Yadav actually. 1 for 10 in 2.1 overs. 102 more runs required. Half of the side already back in the pavilions. Just 63 runs on the board for Marsha. Not healthy signs. And the weather is slightly going from little wet to probably little worse. We might be having rains very soon. So probably Marsha would love to wrap up this innings as soon as possible. But Metlife, on the other hand, they would like to see the back of the batsman as soon as possible going back to the pavilion. 63 for 5 for Marsha.
और वेरी नहीं तुम चलो देखते हैं 63 for 5. 63 for 5, 9.1 overs. Amit Yadav have just captured a wicket. We had a drinks break. I'm sure everyone is refreshed and energized. This is Dafa News Pro Corporate League, and I'm sure the Max Protein Bar, as our sponsor, must have made everyone to keep up the toes healthy, keep their appetite intact, and also our grooming partner, VJone, IFCO, KI Wires, and then our principal sponsor, SG Cricket Balls, which have made this league look even more glamorous and better. Here is Amit Yadav. Little flatter, the bat just thrilled on his hand. He didn't actually understand what happened there. The ball probably just soaked up the soil and probably went like a cobra in his hand. He was actually bemused of what happened. Plays well. Just get a single. Take inside edge of his bat. Was expecting the ball to come more onto the bat, but will eventually settle with a single. 63 for 5 for Marsha. They need more. तो उसमें भी 64 होगा 64 हुआ. Connects well, but not very well towards the man that slips, gives it back to the wicket keeper. But this is good tight bowling here from Amit Yadav. That wicket has definitely given him a lot of confidence to give air to the ball. Hasn't he has actually dared himself to flight the ball. Plays it very well over the head of the bowler, and the umpire into the fence for a straight boundary for Babal Kishore, and he moves on to 29. He moves on to 25 of 33 deliveries. He has consumed some deliveries, but he has also ensured that he plays a sheet anchor role while driving his team towards the chase. Less than 100 runs now required for Marsha. Flies the ball well, drives it very, very well. Fielding, but the fielding was not good enough, and the ball has gone to the boundary.
And interference for 4 runs. So back-to-back boundaries for Bubble Kishore. This will give him an ample lot of confidence. He moves on to 29 of 34 and the score moves on to 72 for 5 after the end of the half of the first innings. And to make you aware of what's happening right in the middle for next couple of overs will be the voice of my Hindi co-commentator Anwar Siddiqui. शुक्रिया मयूर। 10 के बाद 72 5 विकेट के नुकसान पे मुकाबला बहुत दिलचस्पी को चला है। आने वाली 60 गेंदें शेष है और अभी भी 93 रनों की जरूरत है। आने वाली 60 गेंदें शेष है। पारी की 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और इन सबके बीच में बब्बल किशोर मेरा ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है। अभी तक 29 रन बनाकर नवाज ने 34 गेंदें खेली है। शुरू में जरूर थोड़ा सा समय लिया था लेकिन समय के साथ इनकी बल्लेबाजी में निखार आता जा रहा है और एक अच्छा संकेत दिया है मर्सर के लिए। इन्होंने इनके साथ में दूसरे छोर पे भी अच्छे बल्लेबाजी की जरूरत होगी क्योंकि बब्बल किशोर जिस लय में नजर आ रहे हैं उनको स्ट्राइक भी मिलना जरूरी रहेगा। रिक्वायर्ड रेट उससे थोड़ी सी ऊपर है। 72 5 विकेट के नुकसान पे और ये पहली गेंद फ्लैटेड गेंद थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक ब्रेक होती हुई गेंद वीरेंद्र कुमार चौथे ओवर की शुरुआत करें। 3 सफलता इनके नाम है। सफल गेंदबाज हैं। एक और अच्छी गेंद फ्लाइटेड गेंद टर्न के साथ बीट किया इस बार बल्लेबाज को और बल्लेबाज इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि क्रीज छोड़ के बाहर निकले और स्पिनर के खिलाफ बल्लेबाजी करते वक्त एज बैट्समैन आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप गेंद की पिच तक जाकर स्ट्रोक खेलें या फिर आप पैडल स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप स्पिनर के खिलाफ आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है स्पिनर के खिलाफ बल्लेबाजी करते वक्त। ये ऊपर डाली हुई गेंद थी, आसानी के साथ रन मिलेगा 1 रन के साथ अपना छोर बदलते हुए। पर पहली 2 गेंदों पर नजर डाले थोड़ा सा फ्लाइट किया था, आगे की ओर रखा था, बल्लेबाज को आमंत्रित किया था क्रीज छोड़ के बाहर निकलने के लिए लेकिन वो उन 2 गेंदों पर कुछ खास कर नहीं पाए थे। 73 रन 5 विकेट के नुकसान पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है वीरेंद्र कुमार ने। 3.3 ओवर में महज 12 रन दिया। 3 सफलता इनके नाम है। काफी कंजूस काफी किफायती रहे अभी तक इस मुकाबले में। और एक और सफलता, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ऊपर डाली हुई गेंद जगह बनाकर कवर की दिशा से गेंद को निकालने का प्रयास था। विकेट मिलता हुआ अभिनंदन का। गेंदबाज चढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर अगर आप देखिए मर्सर के बल्लेबाजों के अंदर आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। बहुत विश्वास में नजर नहीं आए। और इस तरीके से तो अब पलड़ा फिर से मेटलाइफ का भारी नजर आ रहा है। इसीलिए कहता हूं क्रिकेट के मैदान पर आपको आखिरी दम तक लड़ाई लड़नी है। जब 164 रन बनाई थी मेटलाइफ की टीम ने तो ऐसा शायद लगा भी नहीं होगा कि बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि आपकी गेंदबाजी में बयानापन धारे कंट्रोल अनुशासन है तो आप छोटे टारगेट को भी आप डिफेंड कर सकते हैं और यहाँ पर उस कार्य में अभी काफी हद तक सफलता पाई है मेटलाइफ की टीम। थोड़ा सा अब मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त हासिल करती नजर आ रही है इस मुकाबले में। 6 विकेट हासिल कर चुके हैं, 73 रन स्कोर है। इन्हीं गम की खटाओं में खुशी का चांद निकलेगा। अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। रात आई है तो ढल जाएगी, देखना यह है चिरागों का सफर कितना है।
और इस बार थोड़ा सा संभल करके ऑफ स्टंप पे आए, गेंद कौन से में मोड़ा, शॉर्ट पर विकेट पर गेंद को उठाया जाए, रन लेने की कोई आजादी नहीं। क्या कमाल की गेंदबाजी की है वीरेंद्र कुमार ने, अपने रंग में नजर आए हैं, बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं दी अपनी गेंदों में, लूप दिया है, फ्लाइटेड गेंद देखिए, टर्न काफी देखने को मिला है कि गेंदों में। एक और अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही सड़ी हुई गेंदबाजी की है अभी तक। आप लोग 74 विकेट के नुकसान पे पारी के 11 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। बबल जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनसे उम्मीदें थी, आशाएं थी। अभिनंदन अवतार सिंह जोड़ी क्रीज में मौजूद है, अंतिम विकेट बबल के रूप में गिरा है, और जब तक बबल थे तब तक उम्मीदें ज्यादा थी। अब उनके आउट होने के बाद इन दोनों को इस रास्ते को आसान बनाना है। 74 रन अभी तक। गौरव है, गौरव करके गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। उनकी पहली गेंद स्टंप के बाहर, वाइड गेंद, 75 विकेट के नुकसान पे। खिलाड़ियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, विकेट जब भी मिलती है तब एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ता है जरूर। और इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद हल्के चक्कर से दूर ढकेला है, गली की दिशा में गेंद को उड़ाकर थ्रो किया जा रहा है, मार्शा के राइट पर निशाना लगा नहीं, जो कि मरा रन था, और विकेट गिरेगी तो और हालत पतली होती जाएगी। छिहत्तर रन 6 विकेट के नुकसान पे पीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खूबसूरत मैदान पर ये दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के खिलाफ अपने कौशल, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ उतरी हुई है। इस बार गेंद को निकाल दिया गया, तेज आउटफील्ड गेंद जाएगी बोर्ड के बाहर, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर। इस चौके के साथ ही इसको 86 विकेट के नुकसान पे लगभग आधा समय पूरा हो चुका है रन के लिहाज से, लेकिन अभी काम खत्म हुआ नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी है, खड़े जद्दोजहद की जरूरत है। हजारों ये दिशा गेंद है, बाहर कर बैठे काफी। अंपायर अश्विनी कुमार ने अपने बाजुओं को हवा में फैलाया, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर, काफी मैचों का तजर्बा है, कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं क्रिकेट में। आकाश स्क्वायर लेकर इस बार फुटबॉल पर एक गैप में खेला है, एक और बार गेंद सीधा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। लाख दलदल ही सही मगर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में नहीं सूखता पानी, बर्फ जमने तक ये विश्वास बनाए रखना। 85 विकेट के नुकसान पे इस बार लेग पे आती हुई गेंद को टर्न किया था, और गैप में नहीं, सीधे खिलाड़ी के पास गेंद को उठाया। 85 रन बोर्ड पे। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग, इनसाइड आउट, छियासी रन, 12 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 86 रन बने अभी तक। आने वाली 48 गेंदें शेष है, और यहां से भी काफी रन बनाने हैं। और 89 रन यहां से अभी भी बनाने हैं जीतने के लिए। अड़तालीस गेंदें, 89 रन।
अभिनंदन 11, अवतार सिंह, ये अच्छा शॉट है, यही करना होगा। अब गेम की मेरिट, जितने आप सीधे बल्ले का इस्तेमाल करेंगे उतना आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, और क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की भी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि विकेट आपकी ऑलरेडी जा चुकी है। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट करने का प्रयास, स्पार ऊपर डाली हुई गेंद, फ्लाइट गेंद थी, जगह से खेला। सिंगल के साथ 88 रन, अच्छे विकेट के नुकसान पे। ये अच्छा कार्य किया है, लगातार बेहतर होते जा रहे हैं बल्लेबाज अभिनंदन। बब्बल के आउट होने के बाद अभिनंदन ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, ये साझेदारी को और बड़ा करना पड़ेगा। अविनाश की गेंद और इस बार ऊपर डाली हुई गेंद, गैप पे है, बाउंड्री के करीब, गेंद को उठाया जाए, एक रन लेने का मौका अवतार के पास। एक रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है 89 रन, 6 विकेट के नुकसान पे, बल्कि 90 हो चुका है सिंगल के साथ। पचहत्तर रन की जरूरत, इस बार फिर से जगह बनाई, गेंद को निकाला है, अच्छा प्लेसमेंट है, डीप पॉइंट से गेंद को आए उठाने के लिए, एक रन लेने का मौका, 91 रन। अभी तक पारी के 13 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 91 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 42 गेंदें हैं, जीतने के लिए 74 रन की जरूरत, 42 बॉल रिमेनिंग, 74 रन रिक्वायर्ड, 4 विकेट इन हैंड, 4 विकेट है, 42 गेंदों से 74 की दरकार है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, यकीन हो मोहकम अमल पे हम तो जमीन भी मिलती है, आसमान भी मिलता है। आने वाली 42 गेंदों से 74 की दरकार है। अगले कुछ में क्या कुछ होता है, माइक्रोफोन पर एक बार फिर से मेरे साथ में इंग्लिश कमेंटेटर मयूर, स्वागत है। मुकम्मल नहीं होगा लेकिन मुकम्मल जरूर होगा अगर Marsha does it very well, moves on to 92 for 6, getting tougher and tougher for them, but they are doing well to play out the overs. Amit Yadav, that's expensive, but you never mind, have got 1 wicket. Little bit of inside edge, and he has bowled him. The 7th wicket down. The way they didn't celebrate it too much. I thought they missed it, but bottom edge and the off stump is back. So we have to exactly find out who is going back. But it's 92 for 7. Another set batsman have to go back to the pavilion, and Amit Yadav will be celebrating his second wicket, 2 for 20 of his last over of his spell, with 4 legitimate deliveries to go. And with the weather not looking too good, Metlife would be looking to clear up the tail very, very soon, with just 3 wickets remaining here for Marsha. And they will be not happy. अभिनंदन आउट हो गया।
and we might just have a few droplets coming in. The heaven have actually started, have actually opened up. This is not good sign. Need to try and finish this match as soon as possible. Played on the leg side, probably an inside edge, but that really saved him. Probably an inside edge onto his foot. Thankfully, it didn't roll back to the stumps. Outside off stump, Husanaj, very, very low that off the back foot. It will be much, much better if you come to the pitch of the ball and try and drive the ball. Very, very short outside off stump, cuts the ball towards sweeper cover, rotates the strike. Score moves to 93 for 7 for Marsha. These singles will definitely not hurt Metlife. And left-handed Sumit will be on strike. 1 not out of 3 on the leg side. Wide will be signal. Score moves on to 94 for 7. Still one legitimate delivery remaining in the 14th over from Amit Yadav. 2 for 22. In the air, but outside the thick outside edge, there is a slip in action, and that will bring the end of the over. 14 over has been bowled, and Marsha are now 94 for 7, chasing 165 versus Metlife. The wind has actually picked up, and very, very wide outside off stump. Probably the breeze has actually helped the ball to go more outside off stump. Not even the line of the frame. Score moves on to 95 for 7. 96 now. On the leg side again. This time on the leg side wide. Score now will move to 97 for 7 for Marsha. Ball did spin. He was on the back foot, but it spun very well to hit his ties. 2 wides and now 1 legitimate delivery. So 5 more balls to be bowled in the 15th over. In the air, oh, what a catch! What a blind of a catch! This is for one hand. This is the IFCO safest pair of hand for sure. What a catch! I'm sure he'll see this replay as he goes to sleep tonight, and he will be showing it to his friends and family that I was there at the PCL Sports Complex in Noida on Saturday, on a gloomy Saturday evening, taking off this one-handed blinder to dismiss and take up the 8th wicket for Marsha. What a catch this was. Fine. Is it a bird? Was it a plane? No, that's a fielder. At covers, taking off a blinder. I'm sure John T. Rhodes, the South African, the ex-South African and the current Mumbai Indians fielder, John T. Rhodes will be very, very proud. Try and make connection with him on social media and show this catch. I'm sure he'll be very, very proud. 96 for 8 for Marsha. A terrific catch to dismiss the batsman, and this probably be the end and sealing the deal here for Marsha. Avinash Sinha 1 for 7. After back foot again, flies very well. He won't be afraid to flight the ball. He has already got a wicket. What a wicket that was. Flies the ball again, returns it back to the bowler. Little bit of a misfield will allow him to pick up a single. And score now moves on to 97 for 8. We have just seen Rifko safest pair of the hand, and I'm sure his name will be there very, very shortly. It's in the air, tries to slog it, but will just get a single. Probably no, it will be onto the boundary, and 100 is up for Marsha. 101 for 8. I'm sure there'll be some small clappings going on. The things will be tough for Chase, but
they'll be happy that they have at least crossed up the triple figure mark. 101 for 8 and one more legitimate delivery remaining in the 15th over. Flights and flights very well. Will drive the ball towards the man at mid-off, and that will complete the over. 15 overs have been bowled. Marsha are now 102 for 8. One 102 for 8 for Marsha. Avinandan 20 not out of 18. Shailendra Rawat has just come up to the crease in the last over. Spins the ball, connected. There was a chance of a stumping, but he was well rooted into the crease. Was Shailendra Rawat. Flighted very, very well. Invited the batsman. Again, and this time he connects with the fielder settling underneath it. Oh, it goes over his hand and one drop inside the boundary for 4 runs. Score moves to 106 for 8. At one point, he tried settling under that, but never looked very comfortable. And it went right between his hands and one bounce onto the boundary for 4. So, Shailendra Rawat will move on to off the back foot, risk a single, but eventually they'll get it. There was a fumble from the fielder at the mid-off. Score will now move on to 107 for 8. Abhinandan has a strike. It's in the air, but it will fall in no man's land. Ball haven't been coming onto the bat as much as they are expecting. It has happened in the first innings also. We've seen balls skipping low in the first match also. And this has been the habit, while particularly when the spinners are being displayed, and the story has not been different here in the second match. Here is Kaurav again, flies the ball, it's in the air. Fielder giving it a chase, but to no avail. That will be boundary towards the mid-wicket. The score will move to 1-1-2 for 8. So connections have been really well. They have got 2 boundaries already in this over. Small bit of motivation, but they've lost the wickets. That's the concern here for Marsha. 112 for 8. 1 delivery remaining in the 16th over. Flies the ball well. Again was trying to repeat the shot. Could be a run out, but he was safely inside the crease. And that will be in the end of the over. 16 overs have been bowled. Marsha are now 1-1-2 for 8. You can see the camera getting panning into the skies. There's not a space left for blue sky. It's all gloomy. Probably the dust has come up, and wind has also sharpened up a bit. Score is 1-1-2 for 8. In 16 overs, 4 more overs to be bowled. So 24 legitimate deliveries remaining, unless there are some wides or no balls. Depths it on the leg side, little bit uppishly played. Rotates the strike. Gives it to Shailendra Rawat, 3 not out of 4. 1-1-3 for 8. Avinash Sinha has already picked up a wicket. Again was trying to slog it on the leg side. Bit of a misfield will allow them to come back for the second. And they never thought they would be able to come back for the second. They were always up for the single run. But as soon as they saw the ball evading the fielder, they came back very well for the second one. Score is now 1-1-5 for 8 for Marsha. 4 more deliveries remaining in the 17th over. Avinandan and Shailendra Rawat
cross bats that couldn't get it connected. There are two fielders protecting the boundary on the onside. So need to be careful. Coming down the wicket, couldn't connect it well. Take inside edge from square leg. The fielder comes running and charging and stop it to his foot. Will give a single 116 for 8. Exactly 100 deliveries have been bowled for 116 on the board. Very, very wide outside off stump. The fielder giving a chase. Two fielders converging, but it will go on to the boundary for 4 runs. And this will just act as a soothing balm here for Marsha. Probably not help the cause as much in chasing the target, because Metlife has done a stupendous job in drawing out the runs. They picked up 8 wickets last ball of the over. And White being called, it was down the leg side. He was trying to hide the fine leg boundary. He's seen there is no fielder. The fielder is up near the square leg. Has to be re-bowled. Again on the leg side, but this time he gave himself some room, and the umpire is satisfied. That will bring the end of the over. 17 overs have been bowled. The score is 121 for 8 from Marsha. (17 overs, 121 for 8. (17 overs have been bowled, 121 for 8. Just 3 overs now remaining in this match. First ball of the 18th over to be bowled. Stops the bowler in his run up. Have to re-bowl that. But just 3 overs remaining. Very, very short outside off stump. Plays it very well. But there is protection. Just a single. So this could just provide us some consolation overs for Marsha. Probably not being able to find the boundaries for 4s or 6s. Just occasional 4s. Avinandan on strike. 33 not out of 27. Sorry. Hits straight to the bowler. And he will celebrate that. And it went in a flash to his hand. I'm sure he'll find some itching on his hand. He does feel that. He probably is saying it to his fielders. But the freshness of the wicket to his column will definitely ease the pain. 122 for 9 for Marsha. Just 1 wicket remaining for Metlife to grab now and to seal the final deal and to plunge the final nail into the coffin. But this was a very, very good wicket. Smashed, but straight to the bowler himself. Cotton ball, Rakesh Kumar, 1 for 15, 2.2 overs. He'll try and pick up this last wicket of Marsha, and we'll be very happy if his figure stays from 1 for 15 to 2 for 15. If he doesn't bowl in wide or no ball. But that was a very, very good return catch from Rakesh Kumar. 122 for 9, 1 wicket remaining for Marsha. Flies the ball on the leg side. Was trying to use the long handle. Couldn't connect it. Gets off the mark immediately. Score moves to 1, 2, 3 for 9.
3 more deliveries remaining. He will come around the wicket. Flies the ball again. It's in the air. Is there a fielder converging? Yes! Straight into his lap, and that finishes the match. Marsha, Metlife are the winner versus Marsha. And they will win this match of 31 runs. 41 runs. 41. And they win this match by 41 runs. That's a handsome amount of runs for Metlife to win this match versus Marsha. At one. And it came dwindling between the bat and the ball, but eventually it's MetLife who will smile all the way and deep into the night for today. That's all from the action. From the commentary box, will be there at the presentation very shortly.
अखिल ने 17-16 गेंदों का सामना, 2 चौके 1 छक्के की सहायता से। मेटलाइफ की ओर से गेंदबाजी में वीरेंद्र कुमार ने एक जलवा दिखाया, 4 ओवर में 13 रन, 4 विकेट अपने नाम किए। अमित यादव ने 4 ओवर में 22 रन, 2, राकेश ने 2.4 ओवर में 16 रन देकर 2 सफलता अपने नाम की है। आइए चलते अवार्ड की ओर। इस टूर्नामेंट का पहला अवार्ड है वी जॉन मैक्सिमम सिक्सर अवार्ड, और यह अवार्ड जाता है वीरेंद्र कुमार को। जोरदार तालियों के बीच 3 छक्के लगाए। वी जॉन मैक्सिमम सिक्सर अवार्ड वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट अवार्ड इफको स्पेशल प्लेयर ऑफ हैंड्स। आपने देखा होगा मैदान के अंदर अपनी फील्डिंग से लोगों के दिलों में राज किया है और मुकाबले में अपनी टीम को मजबूती प्रदान की, गति प्रदान की। राकेश कुमार मेट लाइफ, शानदार फील्डिंग के लिए कैचेस पकड़े इन्होंने। इफको स्पेशल प्लेयर ऑफ हैंड्स पूर्णतः साकारी स्वामी। नेक्स्ट अवार्ड रीजन कूलेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवतार सिंह, 4 ओवर 25, 3 विकेट। मर्सर कूल काम रहते हुए उन्होंने अपनी टीम को, एक समय ऐसा लग रहा था 200 रन मूड पे बने, लेकिन अवतार गेंदबाजी से मुकाबले में वापस आया था। अगला अवार्ड है केआई इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच, और यह अवार्ड जाता है मयंक को। 7 चौके लगाए और 30 रन की पारी खेली मयंक ने। केआई इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच। थैंक यू। नेक्स्ट अवार्ड मैक्स प्रोटीन पावर प्ले परफॉर्मेंस, यह अवार्ड जाता है डबल किशोर मेहरा को। 4 ओवर में 26 रन, 3 विकेट और बल्लेबाजी में 29 रन की पारी। मैक्स प्रोटीन पावर प्ले परफॉर्मेंस। Next award, Vision Power Play Performance, another time, Purple T-shirt to come and collect another award. Next, FC Most Valuable Player of the Match, Virendra Kumar. 43 runs, just 20 ball, 4 boundary and 3 sixes, and bowling 4 over 30 to 4. Another award, Max 13 Valuable Player of the Match, Virendra Kumar. Max 14 Valuable Player of the Match. Next award, Vision Most Valuable Player of the Match, Virendra Kumar. Viru, take another back-to-back award received. Top performer today, Virendra Kumar. Next and last, Dafa News Most Valuable Player of the Match, General Time, Virendra Kumar Viru. Dafa News Most Valuable Player of the Match. Congratulations, Virendra.
कैसा लग रहा है इस मुकाबले में बैट और बॉल दोनों से अच्छा प्रदर्शन करना और मुकाबले में मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतना, कैसी फीलिंग आ रही है? सर मैं 4 महीने बाद फील्ड पर आया हूँ। एक तो थोड़ा एनर्जेटिक था, एक्साइटेड भी था, क्योंकि मेटलाइफ का बड़े सालों के बाद मैच खेल रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा। अपना 100% देकर कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल मेटलाइफ का पूरा था, बट थोड़ा किसी का काम किसी का ज्यादा, कॉन्ट्रीब्यूशन सबका था। आप बल्लेबाजी कर रहे थे तो बहुत लोग आनंद उठा रहे थे, आप जिस तरीके से गेम को मिडिल कर रहे थे, जिस तरह से आपने शॉट सिलेक्शन किए थे, 41 रन बनाए, बहुमूल्य बनाए, और आपने बतौर ओपनर अपनी के साथ एक अच्छी शुरुआत दी जिस शुरुआत की जरूरत थी। कैसा फीलिंग आ रही थी जब उनके साथ आप बल्लेबाजी कर रहे थे? मयंक एक अच्छा बैट्समैन है, बॉलिंग करता है। मैंने जैसे बताया 4 महीने बाद आया था, कैप्टन का सीधा सा मैसेज था 6 ओवर हमें कैपिटलाइज करने हैं। तो हमारा गेम प्लान ये था, हालांकि विकेट थोड़ा सा खराब था, थोड़ा सा टूट रहा था, तो हम लोग थोड़ा सेंसिबल विकेट मेंटेन करके खेल रहे थे। हालांकि मर्सर ने थोड़ा अच्छी बॉलिंग की, बट लूज बॉलें हमें थोड़ी ज्यादा मिली, तो उसी का हमें थोड़ा फायदा हुआ। जब आपको के आउट होने के बाद लगातार विकेटों का पतन हो रहा था, तब बैट्स के रूप में क्या माहौल था उस वक्त? किस बात को लेकर आप चिंतन कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे? बस हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि हम लोग कहीं ना कहीं हम 150 तक पहुंच जाए, हमारी बॉलिंग से बहुत अच्छी है, तो हम कहीं ना कहीं डिफेंड कर लेंगे 150 तक। तो बाकी टेलेंडर्स अच्छा खेले, हम लोगों ने जैसा मैसेज उनको कन्वे कर रहे थे, तो उन्होंने विकेट पे कंटेन करके रन बनाया, सिंगल डबल, ज्यादा विकेट नहीं लूज हुआ। दाफा न्यूज़ पे लीग सीजन 11 को लेकर जो एक्साइटेड थे आप, और जिस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या कहना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस है? ऑसम एक्सपीरियंस। सचिन सर के साथ हम पिछले 12 सालों से जुड़े हुए हैं। ये प्रो कॉर्पोरेट लीग जो है बेस्ट है, इट इज काइंड ऑफ वर्ल्ड कप फॉर द कॉर्पोरेट लीग। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, होपफुली हम आगे भी खेलना चाहेंगे, कंपनी को थोड़ा प्रमोशन भी मिलेगा और सचिन सर का भी थोड़ा सा, और दाफा न्यूज़ का भी ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा फायदा होगा। चलिए, आप ऐसे मुस्कुराते रहे, ऐसे ही परफॉर्मेंस हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। आइए हमारे साथ वीरेंद्र कुमार वीरू, आज के टॉप परफॉर्मर प्लेयर ऑफ द मैच। कैप्टन मर्सर प्लीज साहब। चाहत आज हार्ड लगते हैं या फिर जितना आप जिस तरह की शुरुआत चाहते थे वो मिली नहीं? ये शुरुआत तो मिली, बट एक लड़की रनआउट रहा हमारा स्टार्टिंग में, के बॉल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अगर वो रुक के और बात करें कुछ और रन हो जाते हैं, जैसे हम और देखिए 40 रन के मार्जिन से हारे हैं, काफी अगर हमने ड्रैग कर दिया था, बट मेन कुछ विकेट हुए होती है, हम विकेट के हिसाब से नहीं खेल पाए, क्रॉस खेल रहे थे, जैसे एंट्री रहे आउट करके पूरे मौके दिए उनको और आउट हुए। ऐसा क्या बता रहे कि क्रॉस बैटिंग शॉट ज्यादा खेले, आप सीधे वाले के बल्लेबाजी करने के बजाय ज्यादातर आप क्रॉस बैटिंग शॉट खेले, तो उसी तरह दिखा शायद आपके टीम में थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम में वो माहौल नहीं बन पाया और एक के बाद एक विकेट लगातार गिरते थे? जी हाँ बिल्कुल, इस तरह के विकेट लेना, विकेट टूटा हुआ है, स्लो है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट खेलना पड़ता है, ये 6 फॉर्म रखने पड़ते हैं, स्ट्रेट बैट से खेलना है, एक विकेट करनी है, आप क्रॉस नहीं खेलना, सामने से खेलना। तो अपन ने काफी अच्छा साथ दिया, एक एंड का पता दूसरे बैट्समैन को ये था कि आप उनके साथ खेलें, साइड विकेट करें, एक बार एंड चेंज हो जाता है, दूसरे एंड से बैटिंग थोड़ी ईजी हो जाती है, हमें दिखा देने मेरे को सबकी खेले। अगले मुकाबले के लिए ये प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहेंगे और अच्छी वापसी करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। ओवरऑल यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस एडिशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे दाफा न्यूज़ को कॉर्पोरेट सीजन 11 को लेकर? जी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, आगे देखते हैं कैसे जाता है, पूरी टीम एक्साइटेड है फॉर द टूर्नामेंट, लेट्स होप। उम्मीद करते हैं आने वाला मैच आपके लिए अच्छा होगा, आपकी टीम वापसी करेगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। क्रिकेट हमारे साथ मर्सर के कैप्टन चाहत और मैं विनिंग टीम के कैप्टन को बुलाना चाहूंगा। ओके,
बधाई आपको, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। हालांकि स्टार्ट जिस तरीके का मिला था उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाए। एक समय लग रहा था 200 रन आसानी से बोर्ड पे दिखाई देंगे। अच्छा स्टार्ट मयंक और वीरेंद्र या बीच में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जल्दी चले गए पवेलियन। क्या वहां पर थोड़ी सी जरूर आप अपनी वीकनेस पर ध्यान दें? आप कह सकते हैं जल्दी चले गए, थोड़ा सा स्टे कर से सीधे बैट से करनी चाहिए, पॉजिटिव हो गए। और आप कह सकते हैं क्रिकेट ना अनिश्चित काल गेम, कोलैप्स हो गई बैटिंग में, मिडिल ऑर्डर पर कोलैप्स हो गया। लेकिन एज यू कैन सी दैट हम भी ना बहुत सारे अच्छे प्लेयर, ये सारे ऑलराउंडर लास्ट में जो बैटिंग करने आए हैं, ये हमारे अच्छा मैच में इन्होंने मिडिल ऑर्डर में और तो इससे देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम लोग 200 के लिए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पहुंच पाए 200 तक, लेकिन अच्छा टोटल था ऑलमोस्ट 170। कैप्टन, आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में कई बार आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऊपर नीचे बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हैं, कई बार आप उन्हें ओपन कराते हैं, मिडिल ऑर्डर में बुलाते हैं, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए बुलाते हैं, ये जो आप बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करते हैं, क्या ये आपको आने वाले मुकाबलों की और प्रिपेयर और भी स्ट्रॉन्ग करता है? बिल्कुल, यही क्योंकि आप देखते हैं लीग मैच है, लीग मैचेस के अंदर हमें पहला मैच जीतने, सेकंड मैच है, हम वो गए सही बनने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे को बड़े मैचों में काम आएगा, सही बनने के मैचों में हम चेक करें कौन से प्लेयर हमारे ऊपर आके अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। हम उसके लिए प्रिपरेशन करें कि उससे बड़ी मैच आएंगे तो कौन से प्लेयर हमारे मिडल ऑर्डर और ओपनिंग करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं बॉलर ओपनिंग स्पेल में या पावर प्ले कैसे करते हैं और भी प्लेयर अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाया आज मैच में। लेकिन ठीक है, अच्छा था मैच, इस शो में हमारे बॉलर्स के पास हैं जो हमारे अच्छी फिनिश करा हमने, हमें पता था हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉल जो है हमारे स्पिनर्स बहुत खास स्पिनर्स हैं, ऊपर के स्पिनर्स हम अगर पावर प्ले थोड़ा सही तो मिडिल ऑर्डर के लिए खेलने के लिए 30 गेंदबाजों की अपेक्षा इस स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत स्लो विकेट था, इस इतने स्लो विकेट आप अगर तेज डालने जाते हैं तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए हमने भी वो स्ट्रेटेजी बनाई जैसे ये कर रहे थे, हमने इनको देखा बहुत सारा कि इन्होंने बहुत बीच में वेरिएशन लाई बॉलिंग में और स्लो बॉल डाली, उन्होंने उसी को फॉलो करा सेम चीज को और कप्तानी का अनुभव कैसा रहा मीटिंग के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ एज कैप्टन, और इस तरीके की परफॉर्मेंस कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सारे सीनियर प्लेयर इनके साथ कैप्टनसी करना, ये अपने आप में एक कैप्टन है, जितने भी प्लेयर हैं मेरे पास बहुत अच्छे हैं और मुझे किसी पे फील्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। और सब मैच के अंदर रहते हैं हमेशा, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और हमने हमारा एक ना क्लब है, टीम गेम, तो सभी कैप्टन मेरे लिए सब रिस्पेक्टेबल है। देखिए सारे सीनियर प्लेयर है, गिरू है मेरे पास, मयंक है, और 2 प्लेयर्स नहीं आए वो भी कहता है तू नहीं आया, हम उनको मिस कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे हैं इनके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑटो पायलट टीम है कि आप चाहिए जरूरत नहीं कैप्टन को अपने आप ओवरऑल यहाँ पर जो फैसिलिटीज है, एक माहौल है क्रिकेट को लेकर के, जिस तरह की यहाँ पर तैयारियां देखने को मिले, जिस तरह के माहौल देखने को मिला, उसको लेकर करते हैं बहुत अच्छा माहौल है। आप सचिन सर को बहुत पहले से जानते हैं, ये टूर्नामेंट हम बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे कि कभी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, लास्ट सीजन के पास ही हमने इस टूर्नामेंट को बिल्कुल निकलने बहुत लोग अपनी यहाँ तक कि हम समझ सकते हैं कि हमने कितनी मेहनत करेंगे अपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने, और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने काफी किया है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर, अच्छा जो ग्राउंड फील्ड जो संभालते हैं बहुत अच्छे सचिन सर की तो बातें है। उम्मीद करते हैं आपकी ये ख्वाहिशें पूरी होंगी और आप ऐसे ही किसी के साथ बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। हमसे बात करने के लिए